Clear? Yes. Thank you. So now we will learn what is SAP FICO. So SAP is best known for its SAP FICO module of SAP ERP, which is used for financial reporting both externally and internally. All your financial state functions, day-to-day postings are managed in SAP FICO, where FI stands for the financial accounting and the CO stands for controlling. Controlling means it is used for management reporting purpose. The use of SAP FICO module is to record all financial transactions that are posted by an entity and produce financial statements that are accurate at the end of trading period. So these are the components or sub-modules of SAP FICO, where the general ledger accounting, accounts receivable, accounts payable, asset accounting, bank accounting, these are the sub-modules of financial accounting. And cost center accounting, profit center accounting, internal orders, these are the sub-modules or components of controlling module. During the interview, the question will be asked that what are the sub-modules or components of SAP FICO? So you have to name all these sub-modules. Clear? So we will be learning about all these modules in our course, theoretically and practically. So first, let me show you the layout of SAP. Okay. So this is called the client. 100 is the code for development client, development server. 400 is the code for the quality and assurance server, and in 800 will be the code for production server. So this defines in which client you are working or in which system you are working. Each client will have its own database. So For with, sorry, yeah, uh, for every client, the code will be same. I mean, the 100, 800, 400. yes, it is this client is a deployment system. So the client is 100, then you are working in a development system. Okay. If the client code is, then you don't have an access to production system and quality assurance system. If you are working in 400, that means it is a quality assurance server. You cannot make the changes. You just have an access to test the configuration. Okay, okay, okay. Okay. So that is the access for the server. Whether you are working in development server, that will differentiate the server in which The code is server you for are end working in. code is for end user. Sorry, This code is for end user who's testing or something kind of job. 800 is for development server, 400 is for quality and assurance server, where the configurations developed by the consultants in client system 100, that is development server, will be tested in the
client 400, that is the quality and assurance server. Once the project is submitted to the client, to the customer, then the production server is numbered as 800. So that server will be installed on the client's server. So that denotes this uh, number in the client's field denotes in which system you are working, in which landscape of SAP you are working. Okay. So you have to log into your system with the username and password. So this is the GUI, means graphical user interface of SAP. This is called the command box, where you can write the transaction codes. Transaction codes are the shortcut keys to access any configuration function or any end user documents to post the transaction or to or to Display. display any reports. Okay, Mhm. so this is the command box, and these are the different menus. This menu is to open a new GUI window, which is this is called a session. So if you click on this, it will open a new session. So in a single login, you can open up to 6 sessions. Maximum 6 sessions you can open and work on. So there, this is the menu bar. This is also some menus are listed over here. If you hover your cursor on each menu, you will know the importance or the use of any menu. This SAP menu, these are the menu paths to access the desired business transactions, the document you want to post, the report you want to generate. Depending on your applicable modules, you have to access the nodes. Then this is called the end user screen. So in the command box, you have to type SPRO. SPRO means SAP Project Reference Object. Then press enter. Then you have to select SAP Reference IMG. This is called the display IMG. IMG means implementation guide. It is the full form over here. SAP customizing implementation guide. So it is also called the consultant screen. All the consultants can perform their customizations through this screen. So this is a financial accounting module, this is controlling module, then logistics, then sales and distribution, material management. So all the modules are listed over here, and this is the common screen through which all the functional consultants will perform their functional duties. They can customize, do the customizations in the respective modules. Clear? Yeah. Okay. So now, first, to start an SAP implementation
or the customization for the FICO module or any of the module, first you need to define the enterprise structure in SAP. Enterprise structure means the structure of the organization of the business clients into the SAP system. The components of enterprise structures are company, then company code, business area, functional area, segment. These are the means here you have to define how the what is the organizational structure of the uh, client's business, client's company, whether he is having a branch offices, whether he is having the uh, companies in multiple countries, whether he is having a corporate group. That is called the organizational structure, and that we have to define in SAP first to start with the implementation and customization. So the first thing that we need to define is the company code. Company code is represents the independent balancing or legal accounting entity, and it is used for external reporting purpose, and all the financial statements required by the law are created at company code level. A company with independent accounts within a corporate group is called the company code. A separate company code is created per country in order to fulfill the legal requirements such as taxations. So, in this scenario, if a client wants to implement the SAP in all of his company situated in different countries, and he wants to maintain the corporate uh, group reporting, then for each of these factories situated in different countries, you have to create a separate legal entity for representing each country. So in this case, if you are maintaining the SAP for all of his companies, then you need to create four different companies, company codes for each representing each country. Clear? Yes. So SAP have given a standard template to which you can copy and rename with your company code. And if you copy the existing template, then it will copy the definition, the global parameters. Global parameters means those parameters which are globally common, okay, which is not a company's code specific, which is globally common. Then customizing tables. The customizations in the SAP is maintained in table format, so that customizations will be copied. GL accounts, GL accounts mean general ledger accounts, that will be copied. And account determination means uh, the links between various uh, customization with the general ledger accounts, that will be copied. Another method is that you can create your own template. So it is advisable that you can create your own template. So
To do the customizations in SAP, there are two methods. One is you can follow the transaction codes, which is the shortcut codes. So you can directly land on the desired customization, or you can use the menu path, a navigation path to land at the desired configuration function. So to define the company code, this is the transaction code and this is the menu path. So I will show you the all the configurations through navigating through the menu path, so you can be get an idea how the configurations are structured, under which functions it is structured. So we'll go to SAP, and to define the company code, the menu path is display IMG, enterprise structure, definition, financial accounting, edit, copy, delete, check company data, company code. Execute this. So if you want to copy, you can double click on it and select this function, copy object. Then you have to select the existing layout that is given by, that is named numbered by 0001, and then to company code you have to define your company code. We will not going to do that. We will define our own structure. So to define a fresh structure, double click on edit company code data. Go to new entries. Here you have to define the 4-digit alphanumeric code to define the company code. The alphanumeric means it can be alphabetic, it can be numeric, or the combination of alphabet and number. So I will define as DEL4, and here I will name the company as Delphi Data Delphi Data Computers. Okay. Then the city in which the company is situated, then the country, then the currency in which the company wants to transact, or which is the currency prevailing in the country, which is the transactions are maintained in the country. So that is for India, it is INR. Then press enter and click on save. A new window will pop up, and now you have to enter the detailed address and the communication information about the company, about the company code. So again I have to write here the Delphi Data Computers. Search term, if you have a multiple company codes and you want to search the company code data with specific name or specific search term, you can enter. Then the address, that is the premises number, then the postal code,
city, country, then region or state. Remember, for the European countries or American countries, the postal code is 5 digits. Then the communication language and the contact details of the company. So there is a field called standard methods, standard method of communication. So what you will, what you understand with the standard method of communication? So telephone, Sorry. mobile या telephone, or maybe Yes, but so you are providing over here the information that the client uh, given to you. One more thing, all this information you will get from business blueprint. What data to be entered in this field. Okay. Now, since it is a training program, so we are entering all the information hypothetically. But in real time, you will get all this information for all your configurations that we are going to learn. You will get all the information what to enter in which field. You will get the information from business blueprint. So the standard method of communication means how a company wants the external agencies to be contacted, make a contact with the company code. So if you set an email as the standard method, so if you want to communicate with the company Delphi data computers, then you have to send an email to them. The contact number will not be displayed in company's master record, or when the company address will be printed in the any of the reports or any of the communication data, the or any of the communication document, the system will not print the telephone number or mobile number. It only print the email address. So that is the meaning of standard method of communication. okay. Clear? So after entering this information, click copy, enter. And now for each customization process, we have to generate the customization request, or you can say the transport request. So to define the customization request, we have to select create request. So you can see this is the field is blank, because whenever you create a new customization request, system will automatically assign a new transport request number auto by itself. So here I will name the customization with the process define company code, and I will end it with the code that we have created, because if I only enter the description as define company codes
and there are multiple customizations that are performed in the system. So if I want to make any changes in my configuration for the uh, customization for creating the company code, it will be difficult to find my customization request. So with uh, if I end my description for the process with my company code name, so I can easily identify that this customization request is for my company code. So click on save. So you will find that system have generated a new customization request number. So click continue. So why we need to define the transport request separately for each customization? Because if your whole project you have saved all your customizations on a single file, and if that file size becomes 10 GB, and now you want to make and you trans the project, the customizations are complete, now you transfer the file to quality and assurance server, and while testing they have encountered some mistakes or some improvements you need to define, you need to customize. So then they have to upload that 10 GB again, then you will download that 10 GB. You have to make specific changes to a specific function, again you will save that, so that the download and uploading time will increase. But instead, if for each and every configuration you generated the separate customization request, then the file size of that particular customization will be in KBs or MBs. So it will save your time in uploading and downloading the uh, customizations, and you can make you can respond quickly. So that is the purpose of creating the customization request for each customizations individually. Clear? Yeah. The next we have to define is a business area. A business area can be a physical location, means uh, a branch office. It can be a business function, that is sales, production, marketing, or it can be a product segment. Like if you take an example of vehicle industry, then it can be an SUV, it can be uh, small vehicles, then uh, commercial vehicles. So if you further wants to s- uh, segregate your business transactions based on this business areas, or based on this criterias, that you want a separate uh, sales information for your branch offices, so then you can create a business area. It is an internal, it is created for internal reporting purpose, therefore it is optional. Whether if your client business structure defines that he needs to maintain the branch, uh, he wants that his business needs to be divided through branch offices, he wants separate financial records for the branch offices, then you can create the business area.
Again, the business area is not directly assigned to company code, because for each and every posting you have to assign, the end user have to assign, manually assign the business area, because the only end user will know that the sales invoice I'm posting, whether it is for Mumbai location, whether it is for Delhi location. Okay. So while posting the sales invoice, the end user can assign business area to a particular transaction. So that is the use of business area. So how to create it? This is the transaction code and menu path. So go I to, just have one question. yeah, Can I ask? Yeah. So yeah, you can. basically, business area is right. I mean, it is based on line of activity or based on the location, right? Mm. But if we have both, then how we will categorize that? If you have both, Yeah, line of activity as well as the location. so one you can define as business area, the physical location, and for line of activity, you can create profit centers and cost centers. Okay. So these profit centers and cost centers are done in controlling or in the financial accounting only. They are configured in controlling, Mhm. but you can assign them while posting the transaction. Oh, okay. Yeah. Thank you. So to define the business area, this is the transaction code and this is the menu path. So we are already under the menu path. So this is the node define business area. Execute this. So if you go to new entries, you have to define a code. It can be a 4-digit alphanumeric code, and you can define the business area, whether it is your location or whether it is a zone or whether it is a department that you have to define. Since it is defined at client level, so we can access any of this. So therefore, we are not going to define the business area. We have access to all this. Okay. Then the next thing that we need to define is company. It is again optional, because if your client wants a consolidated reporting for its corporate group, then you need to define the company. So, can I ask one question? Yeah. So, here you're using the word client. So, I'm not understanding who is our client, like the company who is asking us to do this work, or the person, like the customer who is client. The company that approaches you to implement the SAP for his or her business function. Okay. Okay. So if your customer or your client is having a business requirement, like he's having a corporate group and he wants to maintain the consolidated reporting for his corporate group, then you need to need to define the company. Can you Uh, repeat again, sir? yes. If the uh,
if your client, or you can say a customer, is for
So now we will discuss about the concepts called fiscal year variant. So the fiscal year is the financial year of the organization, and variant concept means that all the configurations that you save with a name for a respective configuration, that is called a variant. So these variants have some characteristics. Like these variants are stored at client level, means it can be used for number of company codes with respect to business requirements. If you make any changes to these variants, then it will affect the configurations of all the company codes for which you have assigned those variants. So this is the meaning and characteristics of variants. So now we'll discuss about fiscal year variant. So the fiscal year is the financial year of the organization. So there are two types of fiscal years. One is calendar year, that is January to December, and the second one is non-calendar year, that is April to March, October to September, July to June. A fiscal year in SAP contains 12 regular posting periods and maximum 4 special periods. These special periods are also called as virtual periods. And the purpose for maintaining this special period is that all the audit related activities for the close previous fiscal year are performed, and the postings that needs to be entered during this audit activity are performed in special periods, and these special periods are identified as posting period 13 to 16. So any queries? No, sir. Okay. So now we'll understand this concept with one scenario. So here is the scenario. Uh, our posting period is starts with April 2024 and it will ends on March 2025. And in SAP, you have to define the posting periods in relation with calendar months. So since our posting period starts with April 2024 and ends on March 2025, so our posting period one will be April 2024 and so on till March 2025. We have to define the relationship between the posting period and calendar months, so that whenever you post an entry on in any of this month, it will system will understands that in which respective posting period the user have entered the data. So now the question is, for this posting period, what will be the fiscal year? In SAP, fiscal year is defined as single year. Means in this scenario, the fiscal year will be either 2024 or either 2025. It cannot be termed as April 2024 to March 2025. So can you identify what will be the
fiscal year in this case and why? Hello. Hello, So I did not get your question. you didn't get the question. Okay. We are discussing about fiscal year. Okay. So, if your fiscal year is a calendar year, Okay. means April to December, then there will then the calendar year itself a fiscal year. Okay, there will not be any confusion between what is which is the posting period 1 and which is posting period 5 or 12. But if you are using a non-calendar year, that is April to March or October to September, July to June, in that case you have to maintain a relationship between you have to define a relationship between uh, posting period and calendar month. So here we have defined the for non-calendar year, that is April to March 2024 2025, and we have defined that the 12 posting period in relation with the calendar months. So now in SAP the fiscal year is defined as either 2024 or either 2025. So in this scenario, what will be the fiscal year and why? So it could be 2024 fiscal year. 2024. Yeah, Why so? as it's April to December, there are almost 9 months for the 2024, and January, February, March is only the 2025 case. Okay. Because as I'm working on Tally, so there is a fiscal year of 24-25 only. So there is no problem for getting that April 24 to March 25. Okay. Any different views or everyone is agree with it? So basically, my company is follows. Currently, we are working in 2025. I don't know why, but we work in You are 2025 working physical in year. 2025. Yes. Okay. Currently, my company works in Okay. advance for 1 year. It's a US Okay. based company. So we are doing the configurations for Indian company. In India, the fiscal year is followed as non-calendar year, April to March. So, Yes. so in this case, how you can define the fiscal year? It is 24 or 25? I think so 24, but exact I don't know. Yes, you have answered. Any other answers? Or everybody agrees with the answer that one of the candidates have explained? I think it should be 24. It should be 24. 24. And why you think so? Because basically in India we use April to March. Most of the companies use calendar year. So maybe No. Sir, financial year start from the April 24, and it's end on the 25 March. So it's count as a 24. Am I right? Explanation is not right.
Okay. If it is not justifying your answer. Okay. Here the fiscal year will be 2024 because maximum posting periods are falling in 2024. So that is the reason or logic behind defining the fiscal year in SAP. Okay. So there is another column called year shift, and it is very important concept when you define a non-calendar fiscal year. So our three posting periods are from 2025, Jan 2025, Feb 2025, and March 2025. Then what will be the purpose of this concept year shift? What do you think? Year shift, I think, uh, because in 2025, 3 months are falling in the next year. Hmm. So the data, so the work is count from 25. So I think Hmm. that's why it's called year shift. What? No. Okay. What is the purpose? What if you enter any uh, configuration or any command, or you say any settings in this column? What will happen? Sir, if I'm not wrong, all the previous year data will shift to January, February, March continuation. How you can shift it? That's a good question. No idea. Okay. One thing that you have expressed is correct. The data will be shift from one year to another year. But how it can shift? Because April to December is like 2024 posting period, and Jan, Feb, March might be a calendar year. No, No. because your fiscal year is 2024, and it has to be uh, comprising 12 posting periods. So here it is only 9 posting periods are there in 2024. January, February, March Next, counting as a 24. That's why we use the year shifting. it will be count as 2024. That's why we use year shifting. correct. To and to do that, you have to enter -1 in year shift column for these 3 periods. Then system will Hello. understand. Yes. Uh, Please pardon, sir, because I have not understanding what is the physical year in Hindi, sir. Please some cue, some key point you explain me. What is the फिजिकल physical year? Yeah, फिजिकल ईयर मतलब कंपनी का जल्दी बता दे फाइनेंशियल सर, ईयर। थोड़ा हाँ ठीक है मैं सर। अभी वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिजिकल ईयर मतलब हाँ कंपनी का फाइनेंशियल ईयर। ओके फिजिकल ईयर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर, दूसरा है नॉन कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ओके ईयर मतलब जनवरी टू दिसंबर, ओके और ऐसे फिजिकल ईयर में 12 पोस्टिंग पीरियड्स होते हैं एंड 4 स्पेशल पीरियड्स होते हैं। जो स्पेशल पीरियड्स जब नॉर्मल पोस्टिंग पीरियड्स खत्म हो जाएंगे, ईयर आपका ईयर एंड हो जाएगा, तो जो आपके
ऑडिट एक्टिविटीज है, ईयर एंड एक्टिविटीज है, वो डेटा आप वो डेटा पोस्टिंग के लिए आपको उसमें एक्सेस दिया जाता है। ओके, और जो भी डेटा ये स्पेशल पीरियड में पोस्ट होगा उसका इफेक्ट 12th पोस्टिंग पीरियड में आएगा, जो आपका लास्ट पोस्टिंग पीरियड होगा क्लोज फिस्कल ईयर का, उसमें इफेक्ट आएगा उसका। ओके, सो अभी हमने एक Okay. ये नॉन कैलेंडर ईयर का सिनेरियो लिया है। इसमें हमारा पोस्टिंग पीरियड है अप्रैल टू मार्च, तो हमें उसमें ये रिलेशनशिप मेंटेन करना होगा कि पोस्टिंग पीरियड 1 एंड कैलेंडर मंथ पोस्ट, जो हमारे 12 पोस्टिंग पीरियड है उनके साथ हमें हमारे जो कैलेंडर मंथ्स है ये पोस्टिंग पीरियड के अंदर उनका रिलेशनशिप मेंटेन करना होगा कि फर्स्ट पोस्टिंग पीरियड कौन से कैलेंडर मंथ में होगा, सेकंड पोस्टिंग पीरियड कौन से कैलेंडर मंथ में होगा, वो हमें रिलेशनशिप मेंटेन करना है। Okay, sir. एसएपी का कॉन्सेप्ट है कि आप जो ईयर में मैक्सिमम पोस्टिंग पीरियड्स होंगे वो आपका फिस्कल ईयर होगा। देन आपके 3 पोस्टिंग पीरियड्स नेक्स्ट ईयर में फॉल करते हैं 2025। सो 2024 के लिए आपके 12 पोस्टिंग पीरियड्स कैसे डिफाइन होंगे, तो आपको ये ईयर शिफ्ट कॉलम में -1 एंटर करना होगा। इससे सिस्टम को ये एड्रेस होगा कि ये डेट में ये पोस्टिंग पीरियड में जो डेटा पोस्ट होगा वो डेटा बिलोंग करेगा 2024। तो ये कॉन्सेप्ट होता है ईयर शिफ्ट। क्लियर? Okay, sir. सो सिंस यू सर वन थिंग, या ये -1 हम तीनों मंथ में रखेंगे यस तो वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा ये इसी मंथ की बात हो रही है। yes, because you when you enter a data in Jan 2025 and हम्म, you have defined when you define your posting periods in relation to calendar months, that -1 in year shift, that means you are instructing the system that whenever a data is will be posted in Jan 2025, that data needs to be shifted to the fiscal year 2024 for all your ओ- posting periods which are falling in next year. You have to सर enter फिर हटाना this पड़ता है, year कुछ shift. बोलना पड़ता है ना तो हटाना पड़ता है। तो थोड़ा समझ में मत आएगी ना सुन। Hello. ओके सर, गॉट इट। Yeah. So now since you have understood this scenario one, now if your fiscal year is uh, if your posting periods are October 23 to September 24, then what will be your fiscal year and what will be the effect in how will you define the year shift for any of the posting periods? The posting period will be 2024, but year shift will be October, November, December. In the case one, we have put -1. Here we have to put +1 because of this October, November, December falls in 2023. To show this in 2024, we have to put +1 over there, if I'm not wrong. Correct. So here we have to enter the fiscal year as 2024 because the maximum posting periods are in 2024 and we have to shift the data that is posted in October, November and December 2023 to 2024. So we have to enter +1 in the year shift column. So Clear which about it? year, so I'm so sorry. So which year we have to put -1, like the previous year or the next year when we will be shifting the posting? See, if your any of the
your posting periods falls in the next year, Okay. next year to the current fiscal year, Mm-hmm. then you have to shift those data postings into the previous year. Hello. Then you have to enter -1, because here if you see the fiscal year is 2024 and your these posting periods falls in 2025, so they are falling in next year. So to comprise the 12 posting periods for 2024, you have to enter -1 against these posting periods in year shift column. And in this case, the maximum posting periods are falling in 2024, and these three posting periods are in 2023. So here you have to shift these postings to the next fiscal next year. Clear? Hello. No, What sir. if No. No. So, What is your confusion? so like where the posting is shorting, there means the month which is like empty, there we have to put +1 -1. For example, can you explain me with the example? See, if your posting period is uh, October 23 to your fiscal year starts in October 23 and it ends on September 24. Correct. Okay. Yeah. So what SAP says, out of these 12 posting periods, maximum posting periods will fall in which of these between these 2 years will be the fiscal year. Okay. So whenever if you enter, then if you enter a data on 15th of October 2023, Mm-hmm. then if when you enter a +1 in year shift column, then system understands that the data entered on this date need to be shifted to 2024. Okay. Then fiscal year 2024 will have the data postings for 12 posting periods. Got Okay. it? Yes. sir, what if we forget to mention plus minus? Then you will not find a data. You will find data only for 9 posting periods. And this will fall in 2025. Similarly, it will fall in 2023. For 2024, you will only get data for 9 posting periods. Sir, it is mandatory to mention in the beginning or we can edit it later? You have to mention in the beginning, because you are defining all the prerequisites. Okay. Okay. The company code, the company business area, similarly the posting periods, fiscal year. These are all the primary configurations that uh, y- y- you require to use an ERP for your day-to-day postings. Okay. Okay. So now our fiscal year is 2024. So we will maintain this configuration in SAP. So how to do it? First, I have to log into SAP. Sir, Milind is ask a question. Sir, if posting period is Jan to December, then plus minus is required or not? If the posting periods are Jan to December, then it is called a calendar year. So if the posting periods are
January 2024 to December 2024, then you answer it. You can answer. So you tell me what you have to do in the year shift column. Think not required in this case. Yes, it is not required because all your 12 posting periods are falling in the same year. Okay, got it. Okay. So these are some standard fiscal year variants that SAP have provided. So you can use that also. These also according to the your client's business requirement, the fiscal year he is following, or you can create your own fiscal year variant. To maintain the fiscal year variant, this is the transaction code and this is the menu path. So we'll go to SAP. SPRO, SAP reference IMG. The menu path is display IMG, financial accounting global settings, then ledgers, fiscal year and posting periods, maintain fiscal year variant. Execute this. Go to new entries. First, let me check. D4 is there, D5 is there. So we can use D6. Okay. So go to new entries. D6. It is a 2-digit alphanumeric code to define the fiscal year variant. We can add any digit, 2 digits. any 2 digit. Yes. Then you have to describe your fiscal year, that is April to March, and in the bracket you have to enter your company code so that with all the list of company fiscal year variants, you can identify it with your company code. Then you have to define the number of posting periods in your fiscal year, that is 12, and the number of special posting periods, that maximum 4. So enter. So what Select special posting? what? Number of special posting you have. It is used for your year-end closing activities. Your audit activities are performed for the close fiscal year, and the postings that you may need to entered for the close fiscal year are entered in these special periods. Okay. Is this phone number is fixed or it can be changed? Maximum 4. If you want to maintain 2, you can maintain 2. Got it. So select this fiscal sorry. Select this fiscal year. Select this variant and double click on periods. Go to new entries. Since you are following the non-calendar year, you have to maintain this relationship. You have to define this, all these relationships in the SAP. So we'll start with 4, number of days in a month, posting period 1, 5,
For the month of February, always enter 29 days because it will cover the leap year also. So this is how you need to define the periods from your 12 periods in relation with the calendar months, number of days in a calendar months, and year shift for your posting periods 10, 11, and 12, which is falling in year 2025. Okay. So after defining this, click on save, create new request, maintain fiscal year variant, save and continue. Data was saved. Exit. Now you have to assign your company code to fiscal year variant so that this configuration will be applicable to your company code. And to do that, this is the transaction code and this is the menu path. So go to SAP. This is the node. Execute it. Then go to position, find your company code, and here enter your fiscal year variant. This is the purpose to enter the your company code after the you describe the posting periods. Then enter. Description will be auto populated. Then click on save, create new request, assign company code to fiscal year variant. Save and continue. So now, since we have defined the fiscal year variant, now we have to define the posting period variant. In this configuration, we define in SAP that out of 12 posting periods, how many posting periods are open for data entry to end users in relation to this account types. So if your business or your client's business requires that for each type of account that is listed here, you want to define a separate open and close posting periods, then you can define it in for uh, these account types individually. Means if your business if your client requires that for entering the documents for the general ledgers, you want that only posting period 1 to posting period 5 are need to be open to enter the data. Means end users will have access to only 5 posting periods to enter the general documents for general ledgers. Similar for the other account types, if you want to define the different posting periods for
each of these account types. Or if you want that a common configuration to be defined, that how many posting periods are needs to be open to the end user to enter the data in the system, then you have to select the account type as plus, means applicable to all account types that are listed over here. Clear? Yes, sir. Okay. So now we'll see how to define it. To define the posting period variant, there are 3 steps. So first you have to define the variant, then you have to assign it to company code, and then you have to define what are the open and close posting periods. So to define the posting period variant, this is the transaction code and menu path. So go to SAP. We are already under the menu path, display IMG, financial accounting, global settings, then ledger, fiscal year and posting periods. Now collapse this posting period and then define variants for open posting periods. Execute this. Go to new entries. You have to define the code and then the description. So I have a practice that for wherever we need to define the code for any configuration in 4 digits alphanumeric, then I'll prefer to name it same as company code so that I could not required to remember multiple codes. Okay, so whenever you practice and wherever it is required to maintain a code for any configuration which is 4-digit alphanumeric, maintain it same as your company code. So we have defined the code and the description for it. Then save it, create new request, variant for open posting periods. Save and continue. The next you have to assign it to your company code. Execute this. For this, the transaction code is OBBP. Go to position, enter your company code, continue. Here you have to enter your code for variant that we have defined. Save and create new request, assign posting variant to company code. Save and continue. Next, you have to define the open and close posting periods, and this is the transaction code. This is the node. Execute this. Here you have to define the posting period variant that we have just created. Continue. Go to new entries. Here, if you under the account type, if you click on this, you will find that you can define posting periods for
all the individual account types. And if you want to maintain a common configuration for all these account types, select plus. So double click on it. To account, if for any particular general ledger account, you want to define a open posting period, then you can enter the number of that GL account and you can define the open posting period for that particular GL. So here, this is called time frames. So the first time frame is you have to enter the posting period, range of posting period in time frame 1. That is, from posting period 1, I will enter posting period 1. Then for fiscal year 2024 to posting period 12 for fiscal year 2024. So this is the first time frame where I have defined the range of normal posting periods out of 12 posting periods which are open for data entry to the end users and for the fiscal year 2024. The second time frame is to define the special posting periods, where I have to define the special posting periods when I enter the data during the audit process for the close fiscal year 2024, then the same data will be updated on this posting period, the last posting period. If you want to describe in a dates that my fiscal year ends on March 2024, 25, and if my audit starts in May, so my posting period 13 will be the May 2025. Okay, these special periods are not month specific. स्पेशल पीरियड्स जो होते हैं 13 to 16 वो किसी मंथ से रिलेट नहीं होते हैं. जो मंथ में आप ऑडिट से रिलेटेड पोस्टिंग्स के लिए एक्सेस ओपन करोगे वो पोस्टिंग पीरियड 13 हो जाएगा. और फिर उसके बाद जितने भी आपके महीने लगते हैं, 1 महीना 2 महीना, तो वो आगे बढ़ता जाएगा. 13 होगा, फिर 14 पीरियड होगा. So if you entered a data in the month of May for audit for your during audit process, you have to enter some closing entries for fiscal year that is close, that is March 25. So if you enter a data in May 25, then that data will be updated on the records for March 2025, because the March 2025 will be the 12th posting period for the close fiscal year 2024. And this time frame is for controlling module. If there is a specific requirement, then you can enter the data into this time frame. So for controlling module, the time frame, the postings are 16 posting periods. You can define posting period from 1 to 16. They will also comprise the special periods. So after entering this, press enter, then the data will be locked. Any questions on it? So we can add these extra months later, or it should be add on the beginning when we are creating the company. Can you elaborate what exactly you are asking? I'm saying that the 13 and 16 period month, we can add it later, or we have to add on the at the time of when we are making the See, you are not defining this configuration like आज मुझे ये चाहिए, ऐसे नहीं होता है.
So you are defining this configuration based on the blueprint. So all the configurations that you are defining is at the beginning. Okay, after submission of the project, the client cannot ask you that, array, I have to maintain this fiscal special periods 13 to 16. It is already defined. Okay, so we need all Okay. the information before we submit the project. That is the requirement of the ASAP methodology that we have defined. What Okay. the information, see, you cannot start implementing in SAP unless you have a blueprint. So all this information will be there in the blueprint. You will get all written information. Even the process that I am explaining is also will be mentioned in blueprint. हेलो Yes. सर अगर अभी Who will give blueprint? अप्रैल महीने का चालू है, मई मंथ अप्रैल महीना क्लोज करने का है मेरे को, ऐसा हो सकता है क्या? अभी ये तो पूरा साल भर का डाल दिया ना इसमें. Yes, you can define. See what happens. I am explaining here the concept to you. Okay. See, the consultant have to provide a continuous support that we have learned in the last step of a project, that is go live and support. So if the client has a requirement that the data access to the end users to be given only for one posting period, then for each, on the last day of each posting period, you have to ask your consultant to open the next posting period. Okay, that is the part of a support. So you can configure like that if your client has a business practice of allowing access, data entry access to the end users for only single posting period. You can do that. तो सर वो एंड यूजर करेंगे, क्लोजिंग और ओपनिंग का कंसल्टेंट करेगा? Consultant करेगा ना. because this configuration access is only to the consultant. और ये सर 13 और 16 There सिर्फ is an ऑडिट के लिए ना? there is an also an process where a end user runs a program, then you don't need required assistance from the consultant. वो program run करके every last day of the posting period वो program run करके next posting period open हो सकता है. Okay, so वो भी एक method है जो end user ही करता है. अच्छा नहीं, मेरे कंपनी में है वैसा, इसलिए मैं Yes, पूछा. वैसा होता है, वैसा भी होता है. वो भी 52 ही यूज करता है हम्म. और बाद में वो टिक करता है, ओपन और क्लोज में टिक कर देता है. Yes, वैसे है, end अच्छा. user भी कर सकते हैं. और सर 13 और 16 क्या बताया, मतलब समझा नहीं इसको. 13 से 16 डालने का वो क्या रीजन है फिर? आप ये डिफाइन करते हो कि आपके ऑडिट पीरियड्स में अगर आप एंट्री कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको पोस्टिंग पीरियड्स डिफाइन करने होते हैं कि किस फिस्कल ईयर के लिए आप ये डेटा एंट्री कर रहे हो. ओके, सो वो उसे कहा जाता है स्पेशल पीरियड्स, क्योंकि आपके नॉर्मल 12 पोस्टिंग पीरियड्स तो एंड हो गए, का फिस्कल ईयर एंड हो गया. अच्छा. हाँ, तो फिर आपको कुछ एंट्रीज ऑडिट क्लोजिंग एंट्रीज बाकी रह गए. जैसे अभी चल रहा है सर जी, जैसे अपनी जो होता है जुलाई में ऑडिट का वो डेट स्टार्ट हो जाता है. सॉरी, अभी जो चल रहा है जो अभी जो चल रहा है शेड्यूल चल रहा है जो फाइनेंशियल प्लेस इसके लिए जो हो रहा है जो एनुअल रिटर्न जो चल रहा है अभी जैसे चल रहा है सेम होता है ऐसे ना. देखो सारे ईआरपी में ये कॉन्सेप्ट सेम ही होता है.
So all your queries are cleared? सर मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ बोलिए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो अभी हम फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं किसी कंपनी के लिए, ठीक है, तो अब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या हम सारी डिटेल एज इट इज उसकी कॉन्फ़िगरेशन कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या हमें फिर से सारी चीजें न्यू बनानी पड़ेगी? कस्टमाइजेशन वन टाइम होता है, ओके। उसके लिए प्रोसेस है कि अगले साल कैसे वो कॉन्फ़िगरेशंस, देखो कॉन्फ़िगरेशंस उसमें क्या होते हैं अगले साल आपको पोस्टिंग पीरियड्स नए ओपन करने हैं ओके। एंड आपको डेटा फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड करना है, तो वो तो सारे प्रोसेस एंड यूजर ही करेगा, तो उसके लिए भी प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस आप रन करोगे तो वो ईयर एंड क्लोजिंग होके आपका नेक्स्ट ईयर में डेटा शिफ्ट हो जाएगा, आपका पोस्टिंग पीरियड भी ओपन होगा, उसके लिए भी ऑटोमेशन प्रोसेस है। ओके, सो इज द कॉन्सेप्ट इज क्लियर? यस सर। So then click on save, create new request, define open and close posting periods. Save and continue. So the next concept is field status variant. Field status means during data posting, you can control the status of the fields which comes up for data postings. Say during a transaction posting, there is a field called reference. So whether to enter the data on that field or not can be controlled by field status variant. So during data posting, the field status can be maintained for any field is like suppress, means if the field is data field is suppressed, then during data posting that field will not reflect. Required, if the field status for a particular field is set as required, then you have to, the end user have to enter a date valid data in that field. Unless he enters a data, system will not allow him to process that document. Optional, it's self-explanatory. If that transaction requires the data to be entered in a particular field, then you have to enter, otherwise you can leave blank. Display means some predefined data will be displayed for a particular field. So this is called the status of the field, and that you can control with field status variants. And these field status variants are assigned to general ledgers through which, while posting the data for through that particular general ledger, the configurations that you define for field status variant will be applied. So we'll see how to define these field status variants and what are the properties of these field statuses. So to define the field status variant, this is the transaction code and this is the menu path. So we'll go to SAP, display IMG, financial accounting, global settings, ledgers, then fields, define field status variant. Execute this. So this is the default field status variant
provided by SAP. So you need to select this, then click on copy and then rename it with your code, that is DL4, and here you can define the description for field status for your company code DL4. Press enter. Here system will ask that whether you want to copy all. If you select copy all, then all the field status groups and the properties for the respective field status groups will be copied. Or if you select only copy entry, then only this part will be copied. All the field statuses and its respective properties you have to maintain on your own. So it is advisable to select copy all. The number of dependent entries copied, 45. Continue. So you want to check what properties, what configurations are copied. So select your field status variant and double click on field status groups. So here there are different field status groups depending on the nature of general ledger accounts. So while creating a general ledger, you have to assign these field status groups to the general ledgers depending on the nature of that general ledger account. So if you go to field status G001, so double click on it. So there are various fields groups or the tabs that you find during data posting in the documents. So if you double click on this general data, it says that these are the fields which are suppressed. Means this field will not be reflected for the posting of general ledger if you assign this group to any general ledger. And if you make it required, then you have to enter the data in any of this field. That field you make required. Optional, it is self-explanatory. Similarly, go back, double click on additional account assignments. Here, the cost center is selected as optional. Means you have to, if it is required to assign the cost center to particular general ledger, you can assign the cost center. Similar for business area and profit center. And these fields are suppressed, so it will not reflect during data entry for those general ledgers to which you assign this field status group. Any queries? सर ये किस लिए बनाते हैं, मतलब क्या रीजन होता है ये फील्ड्स स्टेटस वेरिएंट बनाने का? आप जब डेटा एंट्री करो, एंड यूजर जब डेटा एंट्री करेगा तो पर्टिकुलर डेटा एंट्री के लिए ये फील्ड्स सप्रेस रहेंगे, ये रिफ्लेक्ट नहीं होंगे. अगर कोई फील्ड आप मैंडेटरी करना चाहते हो, वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की रिक्वायरमेंट है कि ये एंड यूजर ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए सर्टेन फील्ड जैसे कि कॉस्ट सेंटर उसको असाइन करना ही है, तो आप वो फील्ड को रिक्वायर्ड कर सकते हो. ऑप्शनल का मतलब ये है कि ऑप्शनल है, अगर रिक्वायरमेंट है तो वो फील्ड में डेटा एंट्री करेगा एंड यूजर, नहीं तो फिर आप ब्लैंक रख सकते हो. तो ये पर्पस है कि फील्ड्स जो डेटा एंट्री के टाइम जो फील्ड्स कौन से फील्ड में डेटा रिक्वायर्ड है, कौन से फील्ड जो रिक्वायर्ड नहीं है, तो उनको सप्रेस कर सकते हो आप. सप्रेस मतलब हाइड कर सकते हो. तो सर ये पर्पस है. सर एक न्यू एसएपी खोल के आप एक टी कोड डाल सकते हैं, तो आई थिंक मैं उससे समझ जाऊंगा कि ये उसी के लिए है कि नहीं. ग्रुप जो है FAGLB03. अभी यहाँ पे
जैसे यहाँ पे आप जीएल सिलेक्ट करोगे, सो ये जो आगे के ये जो फील्ड्स है, जैसे कि कॉस्ट सेंटर हुआ, सेल्स ऑर्डर हुआ, ये इंटरनल ऑर्डर के लिए होता है, ये प्रॉफिट सेंटर है, तो इसमें डेटा एंट्री मैंडेटरी है, ऑप्शनल है, रिक्वायर्ड है, ये कंट्रोल होता है फील्ड स्टेटस से। अच्छा, समझा समझा समझा। ओके। अगर एंट्री चाहिए, अपना मैंडेटरी चाहिए, तो वही उसमें क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। जो जो रिक्वायर फील्ड एंट्री। के सामने आप रिक्वायर्ड करोगे उसमें डेटा एंट्री मैंडेटरी हो जाएगा। ये सिर्फ ट्रांजैक्शन FB50। प्रोसेस नहीं होगा जब तक ओके। आप एंट्री नहीं करोगे उसमें। अच्छा, ये सिर्फ FB50 के लिए है क्या, और अभी दूसरा भी कोड है ये उसके लिए? जनरल लेजर के लिए है, जनरल लेजर। जनरल लेजर। जो भी आप जीएल बनाओगे, सेल्स जीएल, परचेज जीएल, एक्सपेंस जीएल, अच्छा ये मैंने एक डॉक्यूमेंट टाइप ओपन करके दिखा दिया कि फील्ड्स का मतलब क्या है, अच्छा। कौन से फील्ड्स में आप डेटा एंट्री के कंट्रोल्स आप सेट कर रहे हो, उसके लिए मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट टाइप ओपन करके दिखा दिया। ओके। ओके। सो ये वेरियस फील्ड्स है, जब हम डेटा एंट्री करेंगे तो इसका यूज आपको पता चल जाएगा। अभी सर ये आपने जो बताया वो जनरल लेजर का था, अभी इधर दूसरे जगह अभी इधर कुछ तो है स्टैपिंग, मतलब वो जनरल लेजर में नहीं आता है ना, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के लिए अलग से फील्ड स्टेटस है। अच्छा। सो ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस है, यहाँ पे नेचर ऑफ जनरल लेजर्स है कि अच्छा, आप तो मतलब अभी रिवेन्यू असेट असेट रिलेटेड रहेगा तो असेट के लिए ओपन क्लिक उसके करने लिए अलग से क्लिक करना आपको पड़ेगा। यहाँ पे फील्ड स्टेटस मिल जाएगा। रिवेन्यू अकाउंट्स के लिए आपको अलग से है, मटेरियल अकाउंट्स के लिए अलग से है आपको फील्ड स्टेटस। तो किसे क्या असाइन करना है वो आपको पता चल जाएगा। सर एक असेट का दिखा दो ना, मतलब असेट का थोड़ा, मतलब थोड़ा नॉलेज है उसमें। अभी FB50 का समझ में आया, असेट रिलेटेड अगर बताओगे तो। वो आप जब डॉक्यूमेंट पोस्टिंग दिखाऊंगा तब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, क्योंकि उसके लिए और भी कॉन्फ़िगरेशन है, एसेट तो बहुत दूर रह गया है, उससे पहले और टॉपिक्स है। सो ये फील्ड स्टेटस में आपको बेसिकली डेटा एंट्री के टाइम फील्ड स्टेटस कंट्रोल करना है, उसके लिए ये है। जैसे अभी पेमेंट ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पे आपको पेमेंट टर्म्स डालना है नहीं डालना है वो कंट्रोल होता है, ड्यू डेट एंटर करना है नहीं करना है वो कंट्रोल होता है, और ये एप्लीकेबल है ऑल डॉक्यूमेंट टाइप्स के लिए। सर और एक है, अभी मेरे कंपनी में GL के रिलेटेड एक जन ने ड्यू डेट डाल दिया है, एक्चुअली मैंडेटरी, तो उसको चेंज करके अभी ये कर सकते हैं क्या, मतलब वैल्यू डेट रख सकते हैं क्या? कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन वो पीछे वाला जो एंट्री हुआ वो सब ड्यू डेट में गया है, ड्यू डेट वाला कॉलम में, वो लेकिन अभी अफेक्ट हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा वो एंट्री। ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो? नहीं नहीं, वो एंट्री में आपको एरर छोड़ेगा सिस्टम। अच्छा, तो तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होगा ना, आपके जो ऑपरेटर है, आपके जो ओनर है, उनके अनुसार ना ये ऑपरेट होगा यस, कि उस पर ड्यू या डेट फिर अप्लाई। ये जो इफेक्ट आएगा ना, वो इफेक्ट चेंज के बाद जो डॉक्यूमेंट पोस्ट करोगे उनके लिए ही आएगा, अच्छा, नहीं क्या हुआ मालूम है क्या? पहले डॉक्यूमेंट्स को इफेक्ट नहीं करेगा वो। अच्छा, लेकिन वो ड्यू डेट उधर ही पहले जो हुआ था ड्यू डेट ही आएगा ना, तो आगे आएगा तो वैल्यू डेट में आएगा। करेक्ट। ओके, ठीक है। जो ट्रांजैक्शन पोस्ट हो चुके हैं उनको चेंज नहीं होगा, जो नए पोस्ट करोगे चेंज के बाद अच्छा, उनमें ही वो इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, ठीक ओके। है। ओके। So after configuring this, click on save, create request, define field status सर variant. सर और एक पूछने का है, हम्म ये सब अकाउंट्स वाला ही देगा ना, मतलब उसको क्या चाहिए, फील्ड फील्ड में चाहिए, ड्यू डेट चाहिए?
वो फॉर्म वगैरह कुछ रहेगा ना उसमें, क्या क्या मैंडेटरी चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए? यस, डॉक्यूमेंट पोस्टिंग जो करते हैं उनके रिक्वायरमेंट्स होंगे। हाँ, तो वो लोग दे देंगे ना अपने को, मतलब कंसल्टेंट्स को, क्या कि ये रिक्वायरमेंट है, ये दे दो। तो वही तो पर्पस है ब्लूप्रिंट का। अच्छा। सारा डेटा आपको उसी में मिलेगा, आपको बस सिस्टम में कॉन्फ़िगर करना है। आपको वो नॉलेज होना चाहिए एज ए कंसल्टेंट कि कॉन्फ़िगर कैसे करना है, डेटा एंट्री क्या डालनी है, वो तो ब्लूप्रिंट में लिखा हुआ है। ओके, so now then we have to assign this field status, we have to assign our company code to this field status variant, and to do that the transaction code is OBC5. So this is the node, execute this, go to position, find your company code and assign the field status variant. Save and create new request, assign company code to field status variant. Save and continue. The next concept is document types. So the document types used to identify the nature of your business transactions. Means with the help of document types, you can identify whether the transaction is a customer invoice, vendor invoice, incoming payment, outgoing payment, and so on. So these are the document types that SAP have provided. These are the standard ones. The codes are provided by SAP depending on the type of transactions. That is SA for general ledger accounting, journal voucher SA, AA for asset accounting, AF for depreciation, KR for vendor invoice, KG for vendor credit memo, uh, vendor outgoing payment, KZ. So these are the standard document types that SAP have provided, and which are more than enough for every company. If any company code has a different document types than this predefined document types, you can create your own document type. So, and these are the properties that a document type controls. So I will demonstrate these properties on SAP system. So to define the document type, this is the T code and this is the menu path. So we'll go to SAP, display IMG, financial accounting, global settings, then document types, and define document types. So go to position, click on document type SA, GL account document, double click on it. So the document type defines the type of document, that is, or the nature of document, that is GL account document. SA defines GL account document. Then it controls the number range. This number range defines that for post for these the transactions, how the transactions are numbered, the documents are numbered for
this document type. Means for this under this number range, you need to define the number range interval, number series like 1 to 100. Then the system understands that whenever end user posts a document for document type SA, that is journal document, the system has to assign the number range document number within the number range interval that is defined under number range. Then the reverse document type. Again, if the document is reverse, which is the document type that it controls. Then it also controls for which account types you can use this document type. So this you can control by marking these checkboxes against the account types. Then required during document entry. If you select the checkbox against these fields, then during the document posting, these fields becomes mandatory. You have to enter data in this field. Then the control data, these are also other features or the customizations you need to define according to your business requirement. Again, the exchange rates, if you maintain the exchange rates, then the type of exchange rate also you need to define. So these are the properties that a document type controls. Any queries on it? So, Hello. Yes. Sir, what is BI only under special usage? That is a different module part, BI. Okay. It is not for, it is not part of a FICO module. Okay. And under default value, there is a mention M. So if you are posting the transactions through a journal voucher in foreign currency, so the exchange rate that needs to be considered to calculate the foreign exchange difference is the average standard average rate. Means it is the average rate between of the buying and selling rate for the foreign exchange that are maintained by the banks. Okay. Any other queries? सर असेट के लिए भी टिक किया है, कस्टमर को भी लिए टिक किया है, सबको ऐसे ही आएगा क्या? देखिए, जर्नल वाउचर के थ्रू आप कौन से अकाउंट टाइप के लिए ट्रांजैक्शन पोस्ट करना चाहते हो, आपने सभी को एक्सेस दिया है, वो भी सही है। अगर पर्टिकुलर अकाउंट टाइप के लिए देना चाहते हो, वो भी सही है। असेट के लिए डबल ए आता है ना सर टाइप, तो करेक्ट है। आप जर्नल वाउचर के थ्रू भी बुक करना चाहते हो, कर सकते हो। ये आपका रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे सिस्टम में सब एक्सेस दिया हुआ है। आप अगर चाहते हो कि ये जर्नल वाउचर में सिर्फ जीएल अकाउंट के लिए ही रेस्ट्रिक्ट करना है, तो ये सारे चेकबॉक्स अनमार्क कर दो। क्लियर? सर ये भी ब्लू प्रिंट में आएगा ना, ये सब किसमें? मतलब क्लाइंट ही बताएगा ना अपने को ये ऐसा यस 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 उसको ब्लू प्रिंट बोलते हैं ना सर? यस, ब्लूप्रिंट बोलते हैं। ओके। ओके, सो ऐसे ही डीआर होता है, कस्टमर इनवॉइस। सो इसमें भी सारे ऐसे ही प्रॉपर्टीज आपको दिखेंगे। सो आपका जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है क्लाइंट का, तो उस हिसाब से ये कंट्रोल्स आपको सारे
एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने हैं। सर ये चेंज नहीं कर सकते ना? नहीं, चेंज नहीं कर सकते। क्या चेंज नहीं करना है आपको? मतलब जैसे ये अभी असेट पे टिक हो रखा है, ये आप कस्टमर या ये सप्लायर, कंट्रोल कर सकते हो, ये आप बाद में कंट्रोल कर सकते हो, ये कंट्रोल हो सकता है। आप डॉक्यूमेंट टाइप में कुछ चेंजेस मत करना। जैसे कि अभी डीआर कस्टमर इनवॉइस है, नंबर रेंज 18 है, तो इसको आप 20 करोगे तो किसी और ने अगर ये 18 पे नंबर रेंज बना के रखा है उनके कंपनी कोड के लिए, तो फिर उनको एरर देगा कि आपने ये डॉक्यूमेंट टाइप के लिए नंबर रेंज बनाया ही नहीं। ओके, ये यूजर डिफाइन होता है, ये कंपनी कोड के लिए आप इंडिविजुअल डिफाइन कर सकते हो। जब लाइव सिस्टम में काम करोगे तो सिर्फ आपका ही सिस्टम होगा, दूसरे 10 कंपनी के लिए तो सेम सिस्टम नहीं होगा ना, अलग से होगा। तो वहां पे आपको ये नंबर रेंज आप कंट्रोल कर सकते हो। ये प्रैक्टिस सर्वर है, तो इसमें अगर आपने यहाँ चेंजेस कर दिया तो जो यूजर ये 18 नंबर से पोस्ट कर रहा है, ये नंबर रेंज के अंडर डॉक्यूमेंट पोस्ट कर रहा है, तो उसको एरर जाएगा कि आपने ये डॉक्यूमेंट टाइप के लिए नंबर रेंज स्पेसिफाई ही नहीं किया है। तो यहाँ पे आप नहीं चेंज कर सकते, ये नंबर रेंज कर सकते हो लेकिन इट इज एडवाइजेबल कि आप चेंज ना करो, आप यही नंबर रेंज फॉलो करो। सर ये रिवर्स डॉक्यूमेंट टाइप ए बी क्या है? रिवर्स मीन्स अगर आपको ये डॉक्यूमेंट रिवर्स करना है ओके। तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे आपको डिफाइन करना होता है। सो आप अगर डॉक्यूमेंट टाइप ए बी में जाओगे, ए बी यहाँ पे लिखा है जर्नल एंट्री, सो उसके लिए भी सेम प्रॉपर्टीज आपको मेंशन करने होंगे। अगर लाइक मैंने ये, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट हाँ, या नो नो, नॉट कैंसिलेशन? ओके। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, आपको डॉक्यूमेंट ही रिवर्स करना है। आपने गलत पोस्टिंग कर दिया है डॉक्यूमेंट, ओके। अब वो डॉक्यूमेंट आपको रिवर्स करना है, तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट टाइप है, लेकिन उसका रिक्वायरमेंट है कि उसका सिर्फ नंबर रेंज अलग होगा, लेकिन ये सारे प्रॉपर्टीज सेम होने चाहिए। ओके, जब आप रिवर्स डॉक्यूमेंट किसी डॉक्यूमेंट टाइप के लिए स्पेसिफाई करते हो तो सिर्फ नंबर रेंज अलग होगा, क्योंकि आपका फिर सीरीज डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि आपने अगर पहले मानो 10 डॉक्यूमेंट कस्टमर के लिए पोस्ट कर दिए हैं, 1 to 10 उसका नंबर आ गया है, और फिर आपने वही नंबर रेंज से डॉक्यूमेंट रिवर्स भी कर दिया, तो 11 नंबर से डॉक्यूमेंट रिवर्स दिखेगा और आपका नेक्स्ट कस्टमर इनवॉइस 12 नंबर दिखेगा, तो वो अच्छा सर। डिस्टर्ब हो गया आपका नंबर सीरीज। अच्छा सर, तो एज अ वैसे पॉस नहीं करना है। ओके, तो मैं पूछ रहा था कि जैसे मेरे डॉक्यूमेंट टाइप, सपोज मैं कुछ भी अपने अकॉर्डिंग रख लेता हूँ, मेरे यहाँ आरटी यूज होता है, ठीक है? तो हम्म, उसके यूज के जैसे रिवर्स अगर कोई एंट्री करनी है रेस्टिट्यूशन के लिए, मैं आरटी यूज करता हूँ, तो उस केस में अगर मैं रिवर्स के लिए यूज करना चाहूँ तो मैं अलग से जर्नल एंट्री का कोई हेड बना सकता हूँ या टी आर करके, तो उसमें यस, सेम फील्ड करके हम लोग उसको रिवर्स एंट्री डाल सकते हैं, यस, है ना? कर सकते हैं। ओके। देखिए यहाँ पे किसी ने डीएच बना दिया है, अपनी कंपनी का नाम डाल के फिर उसका डॉक्यूमेंट टाइप लिखा है, तो ये यूजर डिफाइंड है। यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे तो उसने अपने हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन किया है यहाँ पे, यूजर ने, क्योंकि स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप्स तो यही है। इससे अलग कुछ डॉक्यूमेंट आपको दिखता है डॉक्यूमेंट टाइप, तो वो यूजर डिफाइंड है, क्योंकि उनके लिए ये इतने डॉक्यूमेंट टाइप सफिशिएंट नहीं है, उनके एडिशनल डॉक्यूमेंट टाइप्स है, तो उन्होंने, तो आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट करना होगा। क्लियर? सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज
number ranges. So in SAP, each and every document will be identified with document number, and these document numbers are associated with document type. For each document type, you have to specify a document number, a number range for the document type. So what are the characteristics of these number ranges? These number ranges are company code specific, means company code dependent, means if you have 4 different company codes, then for all your different company codes, you have to maintain a different number ranges. Okay. Then here the concept is, if you create a number range 1 to 100 and you have a company 1 2 3 4, so that single number range you cannot assign to all 4 company codes. That is the meaning of company code dependent. Number ranges are year specific or year dependent. For every fiscal year, you have to maintain a new number range. For fiscal year 2024, you have specified the number range. Then for 2025, you have to define again a fresh number range. It can be in a continuous series, but you have to define it again. It is not a one-time configuration. Every year you have to define number range for your document types. A document number range must maintain number range intervals against number range. You cannot just specify that 01 for a particular document type. That 01 needs to contain a number range, number interval, means number series. Okay. If like we have seen here that a document type SA, the number range is 01. So that 01 must contain a number interval, that is number series, 1 to 100, 1 to 1000, 1000 to 2000, like that. You cannot just specify a code number range with a blank number range interval. That is the meaning of the statement, numbers must maintain number range interval against the number range. These number ranges are 2 types: internal number range and external number range. So what you can uh, understand with these terms, internal number range and external number range? How will you define it? What is the meaning of it? Hello? Yes, sir. What is the meaning of internal number range and external number range? सर इंटरनल नंबर रेंज में एसएपी ने जो डिफाइन किया है वो, और एक्सटर्नल मतलब हम लोग उसको खुद No. डालेंगे उसको define Both करेंगे। number range you have to specify. SAP didn't have any default number ranges for document types. It could be automatically assigned by the SAP user. What automatically assigned? Number range, in internal number range, and external number range that we can use as a manually. Can you elaborate with the example?
See, internal number range means when you define a number range interval for every consecutive document, system will assign number automatically for every consecutive document that you post for a particular document type. Means for document type essay, you define number range 01 with number interval 1 to 100. So whenever you post a document, journal document through document type essay, system will assign the number 1, 2, 3, 4 for every number, okay, every document. And if you specify the number range at external, then you have to enter the document number manually for every consecutive document for a particular document type. That is the meaning of internal number range and external number range. Clear? Okay. So now we'll see how to define the number ranges. So this is the transaction code and menu path. So if we go to another session and we'll go to transaction code FBN1, and there are two methods to define number range for the document. Like if you go to this document type and if you click on this number range information, system will take you to the same transaction code. So now the method to define the number range for a document type is that you need to open two different sessions. In first session, you need to open the document type configuration for document type, and second session you can open the session to define the document number ranges. Here you have to enter your company code and select change interval. And now with the help of uh, keys on the keyboard, alt tab, you can switch between the sessions. And here for document type essay, we'll define the number range is 01 fiscal year 2024, and we'll define the number interval as 1 to 100. So if I select this checkbox, it will become a external number range. Then the end user needs to enter the numbers within this number series manually for every document that is entered as journal document. So similarly, for all these document types, we will define the number ranges. So now I will define the number range for DR, that is customer invoice. So double click on it. The number range is 18. So insert line 18. Then DZ for customer payment 14. Then DG for customer credit memo 16. Then KR vendor invoice 19. KZ for vendor payment 17. KG for vendor credit memo 17. We have already defined, so we don't need to define it. Then
Since it is practice server, so I am not changing, but for each document type, you need to maintain a different number range and different number range intervals. 100 के ऊपर भी डाल सकते हैं ना? हाँ, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ी देर में. Then for DG it is over KG. Then for asset accounting it is AA document type. 01 we have already defined. Then AF for depreciation posting 04. सर ये सब डालना ही जरूरी है ना, उसके बिना डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं होगा. Wait. I will explain. Wait for a few minutes. So yes, we have defined all this. So you have to define the document number ranges with the number range interval for all your document types. Otherwise, system will show an error that there is no number range interval maintained for the particular document type and you cannot post the document. The number range interval, you will get it from the client because you have to understand that for a particular document type, what is the high number of documents that a customer required to post every year to record the transactions. For example, if customer post a sales invoice in a quantity of 1 lakh, so usually it is a practice that 1 lakh sales invoices are being posted. So you have to define the number range interval in the series up to 1 lakh or 2 lakh. Okay. So depending on the number of documents a client needs to be posted for in a particular fiscal year, depending on that number range interval, you have to define number range interval for each document type. Clear? Any questions on it? Now you can ask. सर अभी मैं नंबर 100 नंबर का रेंज किया और बाद में मेरे को समझा कि 100 के ऊपर जा रहा है, तो उसमें चेंज कर सकते हैं ना बाद में? पहले तो ऐसा आप क्यों करोगे? मैंने अभी थोड़ी देर कुछ ही मिनट पहले बताया. क्लाइंट बताएगा ना वैसा, लेकिन अभी मैं ऐसा क्लाइंट जैसा बताएगा वैसा करना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं, पहले तो आप क्वेश्चन ही लॉजिकल नहीं है. जब हमने पहले सेशन में सीखा है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ब्लूप्रिंट बनाओगे. ब्लूप्रिंट बनाने से पहले आप बिजनेस को स्टडी करोगे. तो बिजनेस स्टडी में ये भी पार्ट आता है कि आपको जब आप एज इज डॉक्यूमेंट गैदर करते हो तो सिर्फ एक सैंपल डॉक्यूमेंट गैदर नहीं करना है कि उसका जर्नल वाउचर का लेआउट कैसे है. आपको ये भी इंफॉर्मेशन लेनी है कि वो पूरे साल में कितने जर्नल वाउचर पोस्ट कर रहा है, कितने वेंडर इनवॉइस पोस्ट कर रहा है. तो मानो वो 50,000 कर रहा है, नेक्स्ट ईयर उसका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा तो और डॉक्यूमेंट होंगे, तो आप उसको 1 लाख तक का नंबर सीरीज का इंटरवल दे दो ना. तो फिर ये सवाल आएगा ही नहीं कि 100 नंबर से आगे अगर डॉक्यूमेंट जा रहा है तो मैं क्या करूं. ओके. एनी अदर क्वेरीज? सर जो आपने भी नंबर रेंज नंबर के अंदर जो ये नंबर डाले हुए हैं 01, 04, 014, 14, 16, 17, इसका आगे जो फ्रॉम नंबर टू नंबर डाले हुए हैं 0 to 100, ठीक है, और 1 to 100 है वो. हाँ सॉरी 1 to 100,
तो इसमें मुझे जरूरी है कि जैसे 04 के आगे आपने 401 से 500 नहीं तक डाला, नहीं, ऐसा ये नहीं है मेरा ना? प्रैक्टिस है कि जो नंबर रेंज का कोड है हम्म। उससे मैं नंबर स्टार्ट करता हूँ। ओके। जैसे 14 है तो मैंने 1401 लिया है, 14 से स्टार्ट किया है। 16 है तो मैंने 16 से स्टार्ट किया है। ये मेरा प्रैक्टिस है। ओके, ठीक है। Okay, so everybody is clear with it. Click on save, continue. For number range interval, there will not be any transport request generated. The next is posting keys. So the posting keys are used to identify the type of line item transactions. Here in SAP, the debit transaction, so the debit entry and credit entry, both individually are called as line item. So the debit entry is a line item, credit entry is a line item. So that is the meaning of line item. So posting key controls whether the line item is a debit entry or credit entry. Against is control account type. For which account type it is a debit entry or a credit entry. And the third property that of posting key controls is the field status. First, the field status is controlled at GL level when you assign field status variant to GL general ledger, and again it is controlled at second level, which is posting key level. Even posting key level also you can control the status of the field. The SAP recommends you will not to make any changes related to posting key field statuses, because it will cause inconsistency while posting business transaction. What it means that if there is a difference between the field statuses, suppose for a field cost center, in the field status variant, you have defined the status for cost center as optional, and here in the posting key you define as required. So it will create inconsistency. So therefore, the field status at both the levels should be same. If you want to make cost center required, then make it required at both levels. Or if you want to make it optional, then make it optional at both levels. That is the meaning of this statement. So we'll see what posting keys have SAP have defined. So to check the define the posting keys, the transaction code is OB41, and this is the menu path. So we'll directly go through transaction code, that is OB41. So here for the account type customer, for this type of transactions, when a customer will be debited, so the transaction posting key will be in the range of 1 to 9. So for these type of transactions, when you entered a transaction from any of these types with customer, then the customer will be debited and the posting key will be between 1 to 9. If you double click on this posting key 1,
it defines that the transaction will be debited for account type customer when the transaction is sales related. So these are the properties that a posting key controls. If you select this button, maintain field status, it will show you the same configuration that you will find in field status variant. For additional account assignments, all the fields are marked as optional. If any of these fields, if you mark as required, then it will create an inconsistency for the during the transaction you post for customer when you post a customer invoice. Any queries? Hello. No, For each type of account, that is customer, vendor, system have provided the posting keys. For vendor to be debited, the posting key starts with 21 and it is till 29. When you see a posting key for any transaction between 21 to 29, that means the vendor account is credited. And these are the type of transactions when the vendor will be debited. To post the credit transactions on vendor, the posting keys are between 31 to 39. Similarly, for GL account, posting key 40 defines the journal debit entry for journal account. 50 defines the credit entry for journal account. Similar for asset, if the asset is debited, the posting key will be 70. And if the asset is credited, the posting key will be 75 and so on. So if you find that these posting keys are not enough for the type of transactions you are entering into with any of these account types, then these are the alphanumeric posting keys that you can see over here are user defined. So you can define the posting keys through this button create. So that is what is all about the posting key. Any queries? no, sir. Okay. So we are not making any changes. So there is no need to save it. So the next concept is chart of account. Chart of account means it is a list of all general ledger accounts which are used to list the day-to-day transactions in the SAP system and through which we can create the financial statements for the fiscal year. So that is what is meant by chart of accounts. So it is a collection of all general ledger accounts. There are three types of chart of account. One is operating chart of account. It means that this chart of account is created to post the day-to-day transactions. The journal ledgers under this chart of accounts are created to post the day-to-day transactions and prepare the financial statements according to the applicable law for the particular company code under which in which country that company code is registered. And the creation of operating chart of account, operational chart of account is mandatory and you need to assign the chart of account to company code. The second chart of account is a group chart of account. When if a client wants to maintain a consolidated financial statement for the corporate group, then
you have to maintain the group chart of account. Since it is a business requirements specific, so creation and assignment of chart of account, the group chart of account to company code is optional. Then the third type is country specific chart of account. There are few countries where along with the operating chart of account, you have to maintain an alternative chart of account to meet the specific legal requirements for that country. So this type of chart of account is called the country specific chart of account. Again, it depends on creation is depend on the business requirement. So again, the creation and assignment of this chart of account to company code is optional. So this is what is meant by chart of account and the types of chart of accounts. So if you have questions, you can ask. It is clear to all. Should we proceed? Yes. Yes. Okay. So when I ask you, please reply, because then it will not create a confusion. If you When I ask you if it is clear, then please say yes, or if it's not clear, I will explain it again, but please reply. So to define the chart of account, this is the transaction code and this is the menu path. So we'll go to SAP. So the menu path is, now we will, there is a different menu path: display IMG, financial accounting, general ledger accounting, then master data, GL accounts, preparations, edit chart of account list. Execute this, go to new entries. Chart of account can be defined as 4-digit alphanumeric code. So DEL4, then the description, chart of account for DEL4, the maintenance language, in which language you want to maintain your financial records. So select that language. The length of GL account number. Here you will get an interview question. What is the maximum length of GL account number? It is 10 digits or 10 characters. So the general ledger in SAP is defined as number. Okay, it is identified as number. So the length, depending on the length of GL, the number of GLs that a client needs to maintain to post the its business transactions, based on that information you have to define the number range, the length of GL number. Okay, so up to 10 digits or up to 10 characters you can define the length of GL number. So if you entered any number over here like 5, then you have to enter the number, your GL account number should be in the series of 5 characters.
If you leave it blank, then depending on the requirements, you can create a number. It can be 4 digit, it can be 7 digit. Okay. So usually it is left blank. Then सर the इसका next बेनिफिट क्या है? benefit ये है कि मान लो आपका जीएल नंबर पिछले साल आपके क्लाइंट के ईआरपी में उसने 10,000 जीएल पोस्ट किए थे. ओके. सो लेंथ हो गया 5 डिजिट. ओके. सो अगर इस साल उसका बिजनेस बढ़ेगा, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, अगर सेम डिजिट्स है, सेम जीएल्स है, तो वो 10,000 ही जीएल यूज करेगा. अगर मान लो ट्रांजैक्शन बढ़ गए, टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ गए, जीएल्स उसको अलग से क्रिएट करने हैं, तो उसको और इंटरवल लगेगा. तो आपने जब अकाउंट ग्रुप डिफाइन करोगे, उसमें आपको नंबर रेंज इंटरवल डिफाइन करना है, तो आप उसको 7 डिजिट दे देना, 6 डिजिट दे देना, तो उतना लेंथ बढ़ जाता है. क्लियर? ये ओके. पर्पज है. और अगर ब्लैंक छोड़ देंगे तो? ब्लैंक छोड़ दोगे तो आपको सी इसका इफेक्ट आपको अकाउंट जीएल, जब अकाउंट ग्रुप डिफाइन करोगे जीएल के लिए, तो जीएल के लिए जो आपको एक नंबर इंटरवल डिफाइन करना होता है, ओके. तो वहां पे आप फ्रीली डिफाइन कर सकते हो कि 5 डिजिट है, 7 डिजिट है, 8 डिजिट है. यहाँ पे मैंने 5 डिजिट डाल दिया, तो आपको जो लेंथ है आपका जीएल नंबर का, वो 5 नंबर ही लेना होगा जब आप ग्रुप डिफाइन करोगे तभी. ओके. वो नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में उसका इफेक्ट आपको समझा दूंगा मैं. सो ब्लैंक रखते हो तो आप कोई भी नंबर ले सकते हो. कैरेक्टर आपको जितना लेना है, अप टू 10 कैरेक्टर्स. अगर स्पेसिफाई कर दिया नंबर, तो उतने लेंथ का ही आप नंबर ले सकते हो जीएल अकाउंट के लिए. तो वो अगले कॉन्फ़िगरेशन में आपको इसका इफेक्ट समझ में आ जाएगा. ओके. ओके. देन the next interview question that you will get, where you can assign group chart of account for consolidated financial reporting purpose. So you have to answer under the consolidation field, under the consolidation tab, in the field group chart of accounts, the chart of account that you will assign will become your group chart of accounts for consolidated reporting purpose. सो ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट आपको यहाँ असाइन करना है उसका कोड. तो ग्रुप रिपोर्टिंग के लिए आपके एंट्रीज ट्रांसफर हो जाएंगे. वो एक लिंक क्रिएट होगा टू ट्रांसफर दी डेटा फॉर ग्रुप रिपोर्टिंग फ्रॉम योर कंपनी कोड. ओके. क्लियर? यस सर. देन क्लिक ऑन सेव, create new request, define chart of account. सर इसका डेमो तो बाद में मिल जाएगा ना हम लोगों को, मतलब कैसे करेंगे? क्या डेमो? जैसे अगर ये चार्ट ऑफ अकाउंट हमको लिख करना है तो वो कैसे करेंगे? प्रैक्टिकल यूज के लिए ना. तो क्रिएशन ही तो सिखा रहा हूं मैं, कैसे आपको नहीं क्रिएट करना सर, है चार्ट हमें ऑफ भी, अकाउंट. हाँ हमें भी प्रैक्टिस करने के लिए कोई यस, डेमो आपको मिलेगा प्रैक्टिस इसका? करना है. आप प्रैक्टिस जी. करोगे, आपको डेमो सर्वर का एक्सेस दिया हुआ है. नहीं दिया है तो आप आरएम ओके. से बात करो. प्रैक्टिस करोगे तो ही कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, राइट. नहीं तो नेक्स्ट क्लास तक सब भूल जाओगे. सर ऐसे ही हो रहा है. हाँ, तो अभी ये सेकंड सेशन ही है, अगले सेशन के लिए पूरा वीक बाकी है.
तो आप एक्सेस ले लो, टाइम निकालो, दिन का 1 घंटा भी निकालते हो, बहुत ज्यादा हो गया 1 घंटा। ओके, एक कॉन्सेप्ट एक दिन भी प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास पूरे 5 दिन है नेक्स्ट क्लास तक, हो जाएगा। वो मैम से क्या बोलना होगा सर, मैम से क्या बोलना होगा कि मुझे एक्सेस चाहिए? हाँ, अब जो हमारे ये कंसल्टेंट है उनसे क्या बात करना होगा? नहीं समझा नहीं मैं। आपका जो एलएमएस तो पोर्टल है ना, उसके अंदर एक नीचे क्लेम्स का ऑप्शन दिया हुआ है। आप जैसे उसको क्लेम करोगे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। हाँ, एलएमएस पोर्टल के रिगार्डिंग मैं आपको क्यों हेल्प नहीं कर सकता, उसकी हेल्प आपको कस्टमर सपोर्ट या आपके आरएम ही कर पाएंगे, क्योंकि आपकी को क्या एक्सेस है वो मुझे नहीं है, मेरा एक्सेस अलग है, आपका एक्सेस अलग है। So the data is saved. So the next we have to assign this our company code to chart of account, so that the properties that we will define further under chart of account will be get applicable to our company code or get assigned to our company code. So to do that, the transaction code is OB62 and this is the menu path. So we are already under the menu path. This is the node. Execute it. Go to position. Find your company code. So another interview question that you will get, where you can assign the operating chart of account and alternative chart of account or country specific chart of account to your company code. Then the answer will be under the transaction code OB62 in the column chart of account. The chart of account that you will assign will be your operating chart of account, and under the column alternative chart of account, the chart of account that you will assign will be the alternative chart of account or country specific chart of account for your company code. So press enter. Clear? Yes. Then click on save, create new request, assign company code to chart of accounts. Save and continue. So next configuration that we have to define is to define account groups. So tell me, what is the use or purpose of defining account groups in accounts? Why you need to create account groups in accounts? सर ग्रुप से हमारी यह स्पष्ट होती है कि आप किस तरह के लेजर को ऑपरेट कर रहे हो। एसेट्स है, लायबिलिटी है, आई थिंक। Okay. और क्या डिफाइन होता है? नो आइडिया सर। So basically account groups are defined to segregate the general ledger groups. Again, it is used to maintain the number intervals. Means
all your similar characteristics general ledgers can be grouped under a common group and under the account group, and it will create an uniformity in your financial statements. So all your liability accounts are grouped under group liability. Similarly, all your assets general ledgers are grouped under the account group asset. So this is the example of the account group, and this is the purpose why you need to define the account groups. Clear? So Okay, sir. yeah, to define the account group in SAP, this is the transaction code and this is the menu path. So we are already under the menu path. This is the node. Execute. Go to new entries. And here you first need to define your chart of account. Then a name for account group and the descriptive name for your account group. And then the number range interval. So I have defined the account groups and the length of and the number range interval. So my all liability GL accounts will fall under the numbers within the number series 1 5 times 0 to 1 5 times 9. Similar for other account groups. Any questions on it? No. So it Sir, also, what is second yes, cost element? these are used in controlling module. So we have use of it when we discuss the topics on controlling module. I will explain what is secondary cost elements. Okay. So these GLs are only used for controlling module. It has no purpose in finance module. So this is what is meant by account group and creation for and defining the number range interval for GL accounts. Any questions? No.
ओके सर ये सभी कंपनी में सेम रहता है या कुछ चेंजेस भी होती है? सी, ये कंपनी स्पेसिफिक है, कॉन्सेप्ट यही है, हाउ टू डिफाइन नम अकाउंट ग्रुप को का नाम कैसे रखना है। यहाँ पे मैंने बेसिक अकाउंट्स लिए हैं, आप आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ग्रुपिंग के हिसाब से आपको यहाँ ग्रुपिंग बनाना है कि लायबिलिटी साइड में कौन कौन से अकाउंट ग्रुप्स है, तो हर एक के लिए अलग से अकाउंट ग्रुप डिफाइन करना है, उसके लिए अलग से नंबर रेंज इंटरवल डिफाइन करना है। ओके, सो डिपेंड्स आपके कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर कैसे है। अच्छा सर, हमें क्या डेमो के लिए कोई ब्लूप्रिंट मिल सकता है जिसके बिहाफ पे मतलब हम लोग आइडिया लगा सके फ्यूचर में कि हाँ? देखिए, आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप हम्म, आगे कर सकते हो, ये आपके कॉन्सेप्ट्स। सी, यहाँ पे आप तो बेसिक्स सीख रहे हो, हम्म, अगर बेसिक्स पक्के हैं तो आप आगे कर सकते हो काम। ओके। यहाँ पे आपको बेसिक सीखना है। सो अगर आप लायबिलिटी के अंदर, इफ यू आर डिफाइनिंग द ग्रुप्स एज शेयर होल्डर फंड्स, then short term liabilities, long term liabilities, then make sure when you are defining your number series for account groups, for liability side which starts with 1, so you have to define the number series for all the account groups which starts with number 1. Okay, ओके yes, someone is asking query. Okay, then, so after defining these account groups, click on save, create new request, define account groups. The next we have to define the retained earning account. So what is the meaning of retained earning? And सर ये जो आप नोट करके मुझे बता रहे हैं, हम हमको बता रहे हैं, जैसे SPRO, ये सारे हमारे नोट्स में जाके सेव होंगे ना, हमको फ्यूचर में कभी रीड करना हो तो? नोट्स में जाके सेव होंगे मतलब? ये रिकॉर्डिंग क्लास हमारे जैसे सेव हो रहे हैं, अगर आप जो हाँ, बता रहे हो मुझे फिर से रीड करना हो तो ये कहाँ मिलेगा? ये तो रिकॉर्डिंग में तो दिख ही रहा है ना आपको, और नोट्स अच्छा, तो सारे अपलोडेड है LMS पोर्टल पे। तो मेन्यू पाथ, ट्रांजैक्शन कोड, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है वही नोट्स आपको सेम मिलने वाले हैं LMS पोर्टल पे, तो वहां से आप नोट्स देख के ओके कर सकते हो। ठीक है सर। हाँ, एक बार सिस्टम एक्सेस तो करो, जब आपको मिलेगा एक्सेस, एक्सेस तो करके देख लो, फिर आइडिया आ जाएगा कि कैसे आपको प्रैक्टिस करना है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिटेन्ड अर्निंग? रिटेन अर्निंग क्या होता है? Nobody knows? No idea, sir. No. It might be something related to bank or cash. No, it is related to your Sir,
Sir, it is a profit of a company. Yes, Plus, it's a surplus. it's a surplus. So how will you define it? You can define it in your own words. There is no required to use any accounting term or any technical term. You can define, or you can define with an example also what you have understood or what you know about it. Yes, two of you have s- said something, so you are right, but can you elaborate it so we can in understand it, understand this concept in detail or the effect of it in detail? Can you able to elaborate it? Sir, it used to carry forward the balance from one fiscal year to next fiscal year. The purpose of defining retained account, a retained earning account is correct. The account is used to carry forward the balance of the retained earning from current year to the next fiscal year. That is correct. But what do you understand by the term retained earning? What is the meaning of it? Retained earning represent the profit of a company has saved over time and therefore the portion that can be used to reinvest in the business. Correct. So the retained earning means the earnings that company have retained from the profits earned after. Completion financial year, ending financial year. Yes, yes. Okay. It is the part that company have retained out of the profits earned for the current close fiscal year after Yeah, paying for dividends to its shareholders. yes. And this Dividend amount is also. transferred to P&L account, sorry, the balance sheet, and it is recorded on retained earning account. Okay. Clear? Yes, sir. Okay. So to define the retained earning account in SAP, the transaction code is OBIT 53, and this is the menu path. So we are already under the menu path. This is the node. Execute it. Enter your chart of account. Continue. Here the P&L statement type. The default P&L statement type that SAP defines is X. And here we have to define the, here we have to assign a general ledger number for the retained earning account. So we have defined the account groups, that is OBD4 under the transaction code. Then go to position, enter your chart of account, and we have defined these account groups. So tell me, under which account group I should define the general ledger for the retained earning account? Sir, income. Income. Okay. सर इनकम में शो करेंगे Okay. And reason? because it's a profit of a company.
बिकॉज सर हमारे जो फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो हमने सारे लायबिलिटी पे करने के बाद जो हमारे सारे एक्सपेंस सॉर्ट आउट करने के बाद जो हमारी रिमेनिंग जो इनकम बच जाते हैं दैट इज ओके, मुझे बताइए कि जो रिटेन अर्निंग होता है वो हमारे बिजनेस में क्या पार्ट होता है? पहले तो मीनिंग क्या है रिटेन अर्निंग अकाउंट का? कि इट इज द पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट that is that is retained after paying dividends to the shareholders from the profits that is earned for the close financial year. So P&L तो क्लोज हो गया, उसके बाद का वो बैलेंस है तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? It will shows in liability side. Why? जैसे कि अगर हम पीएल एंड अकाउंट को क्लोज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी मतलब आता है लास्ट में, तो वो हम अगर शिफ्ट करते हैं तो वो बैलेंस शीट में ही शिफ्ट करेंगे और वो लाइबिलिटी साइड में ही शिफ्ट करते हैं सर। लायबिलिटी शेयर Yes, we have to define the retained earning account under liabilities because it is a part of reserves. Whether it is a debit balance or credit balance, it should be defined under liabilities. It is a part of reserve. Since till now we have not defined the journal ledgers, so we don't know how many general ledgers we have to define under the group liabilities. So it is the practice that you need to assign the last number of your account group liabilities, or if you have created a separate group for reserves, then the last number of that account group under the liabilities to retained earning account. So if when you define it, system will show you an information. The yellow mark represents information that this GL account is not created. Just a minute. Okay, I have entered one extra digit. It should be 6 digit. Yes. Here also. Yes. So make sure it matches the digits. Here I have defined at 6 digits, so it should be 6 digit only. So it is said it is not defined. So yes, we have aware. So press enter. The warning will disappear. Then click on save, create new request, define retained earning account. Sir, I have a query. Okay, you can ask सर now. अभी जो आपने जैसे बताया कि इनमें लिस्ट ऑफ अकाउंट्स जो भी हैं जस्ट लाइक लायबिलिटीज एंड एसेट्स हैं, so under the head of the liabilities do we need to create all the GL accounts as well for making entries Do you need to create just GL like accounts? reserves and current liabilities and yes, do we need to create GL accounts as well under liabilities? Yes, because through this GL accounts, journal ledgers, you have to post the transactions. So all your Okay. GL accounts for liabilities, incomes are you need to create under the respective account group. So it will create an Okay. uniformity in your financial statements. Okay. Okay. And how do we create all the GL accounts just like as in the GL account groups as well, or something else?
In the next session, you will learn how to create GL accounts in SAP. Okay. Okay. And the current screen you have mentioned is from account to account. So it means that in liabilities we have the account numbers which will be till the 199. I mean to say this will be, we have assigning the numbers of the accounts or as We have to assign the, we have to create the general ledgers using the numbers within this number series. okay, that is Because series. yes, Okay. this is the number series. Interval means number series. Yes, correct. Then after that we can जैसे कि बिल की identify this सीरीज is होती the है, जैसे बिल की सीरीज account of होती the है liability. 091 से स्टार्ट होती है या Okay. Okay. Mm-hmm. Okay. Yeah. So the data is saved here also. Yes, the data is saved. Okay. So we can continue with these topics. Okay. So now the next topic is defining the tolerance group for GL accounts. Here we define the limits up to which amount a transaction can be recorded on general ledgers by the end users. That limits we define in defined tolerance group for GL accounts. So tolerance means round off. No, tolerance means limits. Like Like up to which amount you can record a transaction on general ledger. okay. So to define the tolerances for GL accounts, this is the transaction code and this is the menu path. Display IMG, financial accounting, general ledger accounting, then business transactions, then open item clearing, clearing differences, define tolerance for GL accounts, tolerance group for GL account. Execute this, go to new entries, enter your company code. We will leave the tolerance group code blank. Then the tolerance will give the description and enter. Here, the blank tolerance group itself a code and the tolerance group is keep, then the tolerance group, a blank tolerance group indicates that these limits are applicable for all the transactions or all the users who are working under this company code. Okay, it is applicable to all of them, this customization. इसको थोड़ा हिंदी में बताइए सर, ये क्या बता रहे हैं आप? ठीक है, टॉलरेंस क्या है, इसको लिमिट तो समझ गया. हाँ. Again, here we have defined, again we, here we can define that what is the maximum amount up to which a transaction can be recorded for general ledger. Again, the maximum credit amount up to which a transaction can be recorded on the general ledger for credit posting. ये ब्लैंक टॉलरेंस ग्रुप भी एक कोड होता है
ये ब्लैंक इसके लिए रखा जाता है ताकि ये कॉन्फ़िगरेशन वो सारे अकाउंट यूजर अकाउंट्स को एप्लीकेबल हो जो ये कंपनी कोड के अंडर काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ये दोनों फील्ड्स ब्लैंक रखे हैं। इसका मतलब ये होता है कि डेबिट पोस्टिंग और क्रेडिट पोस्टिंग के लिए कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिट अमाउंट तक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो सकते हैं। यस। ये जीएल अकाउंट के लिए यही सेटिंग्स स्टैंडर्ड है, टॉलरेंस सेटिंग। दिस इज द स्टैंडर्ड सेटिंग फॉर टॉलरेंस ग्रुप फॉर जीएल अकाउंट। क्लियर? Okay, sir. Then click on save, create request, define tolerance group for GL accounts. Then the next configuration that we need to define is define tolerance group for employees. Here we will define the upper limits, that is the highest limit up to which a user can post the transaction. यहाँ ये कॉन्फ़िगरेशन में हम ये डिफाइन करते हैं कि अप टू एंड यूजर के लिए हाईएस्ट लिमिट क्या होगा ट्रांजैक्शन पोस्टिंग के लिए। जो भी लिमिट सेट करना है वो हम ये लेवल पे सेट करते हैं, जीएल अकाउंट्स को पूरा एक्सेस दे देते हैं। सो नाउ विल सी हाउ what configurations we can define. So to define the tolerance for employees, the transaction code is OBA4 and this is the menu path. So we'll go to SAP. This is the node. Execute this. Go to new entries. Here we will keep this tolerance group blank. Enter your company code. Here we will define the amount per document. So here I will define the maximum limit. I have defined that what is the maximum limit an end user can post a transaction up to this amount. यहाँ पे हमने ये डिफाइन किया है कि ट्रांजैक्शन पोस्टिंग डेबिट क्रेडिट मिला के एक ट्रांजैक्शन होता है, तो उसका हाईएस्ट लिमिट क्या है कि ये अमाउंट तक एंड यूजर ट्रांजैक्शन पोस्ट कर सकता है। अमाउंट पर ओपन आइटम अकाउंट आइटम, यहाँ here I have defined 8 digits because the amount per open item account item means either debit entry and either credit entry. So the total of both the amount should not exceed this limit. Therefore, I have defined it as 8 digits. सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि डेबिट ट्रांजैक्शन के लिए कितना लिमिट है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए कितने अमाउंट तक एंट्री कर सकता है। दोनों डेबिट और क्रेडिट का टोटल जो डिजिट होगा अमाउंट का वो ये लिमिट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसीलिए ये 10 डिजिट है, ये 8 डिजिट है। मैक्सिमम wait, ask your queries later. So cash discount per line item, it is 10%. So press enter. So here what up to what percentage assist an end user can allow cash discount, कितने परसेंट तक एंड यूजर कैश डिस्काउंट अलाउ कर सकता है ट्रांजैक्शन पोस्टिंग में, to adjust the difference between the invoice amount and
payment amount. So ये payment differences, ये rounding of, this is the rounding of differences. We will discuss this chapter later. So right now I am keeping it blank. ये पेमेंट डिफरेंस का मतलब होता है राउंडिंग ऑफ डिफरेंस, तो उसके लिए अलग से टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, तो अभी ये ब्लैंक रखा है. द मीनिंग ऑफ कीपिंग इट ब्लैंक मीन्स we have to receive, or the payment amount should be 100% equal to the invoice amount, whether it is incoming payment or outgoing payment. So we have kept this group blank because it is applicable to all the users that are working under this company code. Now you can ask your questions. सर हेलो, क्या इसे हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते? किसे ब्लैंक छोड़ना है? अमाउंट पर डॉक्यूमेंट. देखो, ये मैंने जो एंट्री, जो डिजिट्स डाले हैं, वो रिप्रेजेंटेशन पर्पस है. इन रियल टाइम देयर विल बी अ डिफरेंट टॉलरेंसेस फॉर एवरी यूजर. हर एक यूजर के लिए अलग से लिमिट होता है. ये क्यों सेट किया जाता है? टू प्रिवेंट द ह्यूमन एरर्स ड्यूरिंग डेटा पोस्टिंग. मान लो आपको पेमेंट करना है, पेमेंट डॉक्यूमेंट पोस्ट करना है 5 लाख का, और एम्प्लॉय ने एक जीरो बढ़ा दिया, तो 50 लाख हो जाएगा. तो एम्प्लॉय को अगर लिमिट ही 5 लाख का है, तो वो जीरो अगर एक्स्ट्रा डालता है तो सिस्टम एरर मैसेज प्रॉम्प्ट करेगा कि आपका लिमिट 5 लाख का है, आप 50 लाख का एंट्री नहीं कर सकते. सर इसको मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मैं किसी पर यूजर को ऑथराइज करता हूँ 5 लाख के लिए और किसी को करना है 10 लाख के लिए, तो उसके लिए मुझे जो ग्रुप वाला अपना कॉलम ब्लैक है अभी, वहां पर कुछ चीज मेंशन करनी पड़ेगी उसके लिए? करेक्ट, करेक्ट. आपको वो ग्रुप को नाम देना होगा, और अगर आपने हर एक एम्प्लॉय के लिए अलग से टॉलरेंस सेट किया है, तो हर एक टॉलरेंस ग्रुप के लिए आपको ग्रुप नेम क्रिएट करना होगा, और हर एक यूजर को वो असाइन करना होगा. तभी जब आप वो यूजर को वो ग्रुप असाइन करोगे, तो जो सेटिंग्स आपने यहाँ मेंटेन किए हैं, वो पर्टिकुलर यूजर के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे, वो लिमिट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे. वो लिमिट्स के ज्यादा का ट्रांजैक्शन वो यूजर पोस्ट नहीं कर सकता. सर ये ग्रुप जो है हमें आगे पता चलेगा कैसे बनाएंगे, या क्या रहेगा? क्या बनाना है? मतलब सेटिंग्स तो यही रहेगा. आपको बस ग्रुप का नाम देना है थोड़ा. हाँ, वो मैं वो भी बता रहा हूँ. ये ग्रुप का आपको सिर्फ नाम देना है. ओके, पहले ये कॉन्सेप्ट समझा के नहीं, फिर हम अगले वाले कॉन्सेप्ट पे जाते हैं. ये क्लियर है सर. ओके, so then click on save, create new request, define tolerance group for employees. Save and continue. So मान लो अगर यहाँ पे आपने एक ग्रुप को नाम दे दिया 1234, और यहाँ पे आपने लिमिट सेट कर दिए, टोटल ट्रांजैक्शन लिमिट 5 लाख, और डेबिट और क्रेडिट के लिए 2,50,000 ईच. ओके, सो आपको क्या करना है? ये नोड पे जाना है, असाइन यूजर्स टू टॉलरेंस ग्रुप्स. एग्जीक्यूट दिस, और यहाँ पे न्यू एंट्रीज पे जाके यूजर नेम के सामने वो कोड डाल देना है. तो वो कोड ये पर्टिकुलर यूजर के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा. जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपने, जो लिमिट्स अपने वो टॉलरेंस कोड ग्रुप कोड के अंडर क्रिएट किए हैं, वो यहाँ पे आप असाइन कर दोगे, तो
ये यूजर के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर? Okay. Okay. ओके। So the topic is creation of GL master centrally. So through GL accounts, that is general ledger accounts, we post the transaction into the system for external and internal accounting report purpose. We prepare these general ledger accounts under the account groups so that all the general ledgers with these similar characteristics can be maintained in under a common account group. So जनरल लेजर के थ्रू हम ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं इन एसएपी। जनरल लेजर के थ्रू ट्रांजैक्शन पोस्ट करने से हम एक्सटर्नल और इंटरनल रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। जनरल लेजर प्रिपेयर होता है ग्रुप अकाउंट ग्रुप के अंदर ताकि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के जीएल्स एक कॉमन ग्रुप के अंडर ग्रुप हो और आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे। इसलिए जीएल मास्टर क्रिएट किए जाते हैं। टू क्रिएट द जीएल मास्टर द ट्रांजैक्शन कोड इज FS00 and this is the menu path. So go to SAP FS00, enter, click on create button. Here you have to change your company code, then your GL. हाँ सर, 1 सेकेंड। ये कंपनी कोड हमें याद रखना होगा हमेशा? Obviously, अगर मेरे पास काफी कंपनी काम है तो अचानक मुझे इस सीट पे भी काम करना है और दूसरे सीट पे भी काम करना है, तो याद रखना होगा। जरूर। ओके। So to decide or to check under which account group and with what number you have to prepare the GL account, you need to go to account group that you have created. So before that, go open another session and go to transaction code OBD4. Go to position, enter your chart of account, continue, and this is the account group that we have maintained, and accordingly we have to start maintain our GL accounts within these number ranges. So first I'll select create, then enter the company code for which I have to create the GL account. Then I have to create a GL account for sales account. So if you switch between the two sessions, so GL account will be created under income groups and it starts with 3 lakh. So 3, continue. Here you have to select the GL account group, and the GL account group for income revenue is primary cost because it is a primary revenue. Then account group, instead of income, if you select expense, then system will show you the error that the expense group only defined for accounts. So system will show you the number range for expense group. So you are selecting the wrong account group. So income. So this is also another use of maintaining the account groups. Name your GL, sales account, short text,
then the long text, sales account. Go to control data. This is called the chart of account section of general ledger. And this is called the company code data section. सर जनरल लेजर का मतलब वही होता है ना जो हम उससे बनाते हैं लेजर जो हाँ, हम जनरल लेजर मतलब जो जनरल लेजर के थ्रू आप ट्रांजैक्शन पोस्ट करोगे, डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शन पोस्ट करना है ना। हाँ हाँ, जैसे हम लोग टैली में लेजर बनाते हैं, किसी पार्टी का लेजर बनाया, एसेट्स का लेजर बनाया, जस्ट लाइक सेम करेक्ट ना। करेक्ट, सेम सेम। देखिए अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, सिर्फ आपको लेआउट समझना है और डेटा पोस्टिंग कैसे करना है वो समझना है। अकाउंट्स कहीं बदलेगा नहीं, कोई भी ईआरपी हो। ओके सर। अकाउंट्स पोस्टिंग का तरीका वही रहेगा। कौन, देखिए बेसिक्स कहीं चेंज नहीं होंगे, ईआरपी कोई भी हो। बस इसको लेजर को इसको जीएल, जी जनरल लेजर बोलते हैं इसमें। हाँ, ओके सर। then can you anybody explain how this currency INR is auto-filled in this field, account currency, for the GL account creation, during the GL account creation? ये अकाउंट करेंसी INR ये फील्ड में ऑटो फिल कैसे हुआ? जब कंपनी मेड किया था उसी समय में इंडियन कौन करेंसी डिफाइन किया था। इंडियन करेंसी सेलेक्ट किया होगा। कंपनी क्रिएशन के टाइम पे आइनर सेलेक्ट किया था, इसलिए ऑटोमेटिक आया यहाँ पे। करेक्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। So your general ledger currency will always be the company code currency. Then you have to select the sort key. How you want to sort your documents in a daybook register or sales register or purchase register. So these are the methods how your transaction will be sort in the list of transactions that you post on this GL account. आप के जो रजिस्टर होंगे, सेल्स रजिस्टर, जो जीएल का रजिस्टर होगा, उसमें आपको ट्रांजैक्शंस कैसे सॉर्ट करने हैं, पोस्टिंग डे वाइज करने हैं, डॉक्यूमेंट नंबर एंड फिजिकल ईयर के अकॉर्डिंगली करने हैं। सो दीज आर द वेरियस मेथड्स ऑफ sorting the data between of, of your postings. So based on your client's requirement, how he wants to sort the data between in the day book, sales register, purchase register, you have to select the method. The standard method to sort the data is posting date. And for that, the code SAP have given is 001. सर पोस्टिंग डेटा क्या है? पोस्टिंग डेट लाइक जिस दिन आप लेजर पोस्टिंग करोगे, इट मींस पोस्टिंग आपने डेट। 10 ट्रांजैक्शन पोस्ट किए हैं ओके सेल्स जीएल पे, तो ओके। उनका अगर आपको सॉर्ट करना है हाँ तो उसका सॉर्टिंग कैसे होगा? तो वो पोस्टिंग डेट के अकॉर्डिंग ओके असेंडिंग या डिसेंडिंग होगा। ओके ओके, ओके। और कुछ यस सर। और मेथड से करना है तो वो भी मेथड यहाँ पे मेंशन है। आप जो अप्रोप्रिएट मेथड है आपके क्लाइंट के लिए, वो आप यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। बेसिस ऑफ कोड ना सर, ये जो कोड है उसके हाँ बेसिस ये पे आप कैसे कोड आपको है, सॉर्टिंग करना है। हाँ ये हाँ। कोड है और ये उसका डिस्क्रिप्शन है। यस सर। सो गुड दिस इज सर। द स्टैंडर्ड मेथड by selecting posting date, and that sorting is called sort key. So this is the sort key. Okay, बट सर जब हम किसी इसका कोई लेजर वगैरह ओपन करेंगे तो वहां पर सॉर्टिंग के दो ऑप्शन रहते हैं,
तो हम किसी से भी मतलब A to Z कर सकते हैं ना, जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिर्फ इसी से सॉर्ट होगा। पोस्टिंग डेट से, डॉक्यूमेंट डेट से भी सॉर्ट कर सकते हैं ना हम लोग, या देखिए, डिस्क्रिप्शन ये से। प्राइमरी सॉर्टिंग मेथड है। आप जो किसी लेजर के लिए आपको स्पेसिफिक मेथड से सॉर्ट करना है, दैट इज दी सिचुएशनल सॉर्टिंग मेथड। ये स्टैंडर्ड मेथड है। आपको बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले कैसे दिखेगा, एंड यूजर को बाय डिफॉल्ट डे बुक में डिस्प्ले कैसे दिखेगा, ओके ट्रांजैक्शन सॉर्ट कैसे दिखेंगे बाय डिफॉल्ट, ओके आपको डॉक्यूमेंट नंबर से सॉर्ट। देखिए, स्पेसिफिक आपकी रिपोर्टिंग की जरूरत क्या है, वो हिसाब से आप चेंजेस करोगे, वो आपको अवेलेबल है। लेकिन ओके यहाँ पे आप स्टैंडर्ड मेथड सेट कर रहे हो। ओके। क्लियर? अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप कर सकते हो उसको यस, सॉर्टिंग। यस, ये तो आपको क्लाइंट ब्लूप्रिंट में बता देगा। ओके सर। आपको ये भी चीजें जितनी चीजें आप कॉन्फ़िगर करना सीखोगे, वो सारा चीज आपको आपके डिस्क्राइब होगा ब्लूप्रिंट बनाने ब्लूप्रिंट में। से पहले जो बिजनेस स्टडी करना है, उसमें आपको ये चीजें सारी मालूम करनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है। तब आप ब्लूप्रिंट बनाओगे ना, एक्शन प्लान कैसे बनाओगे। तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने मिलेगा। पर जब आप एक बार कंसल्टेंट हो गए, आपने सर्टिफिकेशन कर लिया, तब तो आपको सब आता है। तब तो आपको पता है कि कैसे प्रोजेक्ट हैंडल करना है। आपका जो रोल आपको दिया जाएगा वो कैसे परफॉर्म करना है, तब तो आपको पता होगा। Then create bank interest. Here we have to assign field status group. So for sales, so now SAP have defined the field status groups that maintained uh, we have maintained a field status variant. So the field status for revenue account group is G029 revenue account. So select it, press enter. So now whatever the field statuses that we have maintained under this transaction code, sorry, this field status group will be applicable to the sales GL. With this assignment, the statuses of the fields during the posting of sales invoice will be controlled. ये फील्ड स्टेटस के अंदर आपने जो फील्ड स्टेटसेस मेंटेन किए होंगे, कौन सी फील्ड सप्रेस है, कौन सी रिक्वायर्ड है, कौन सी ऑप्शनल है, तो वो सारे कस्टमाइजेशंस, वो सारे कॉन्फ़िगरेशंस असाइन हो जाएंगे ये जीएल को। और थ्रू दिस जीएल वो इनवॉइस में उसका इफेक्ट दिखेगा। जब आप ट्रांजैक्शन पोस्ट करोगे, तो वो इफेक्ट आपको वो ट्रांजैक्शन पोस्टिंग में दिखेगा। एक सिस्टम क्या आपसे रिक्वायर्ड कर रहा है, रिक्वायर्ड फील्ड है, तो डेटा एंट्री किए बिना वो वाउचर आगे नहीं बढ़ेगा, वो डॉक्यूमेंट आगे प्रोसेस नहीं होगा। वो सारे एरर्स हम डॉक्यूमेंट पोस्ट करेंगे तब आपको पता चल जाएंगे। इफेक्ट आपको कॉन्फ़िगरेशन के वक्त ध्यान रखना है कि एंड इफेक्ट क्या आने वाला है। सो आफ्टर मेंटेनिंग दिस डेटा, क्लिक ऑन और वहाँ सेव। पर ये फील्ड स्टेटस हम कैसे, मतलब कि क्या है ये, कैसे पता चलता है कि इसी ग्रुप में आएगा ये रेवेन्यू अकाउंट में? सेल्स आपका क्या है, रेवेन्यू है। ओके। फील्ड स्टेट, ये जो फील्ड स्टेटसेस है, ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग डिजाइन किए हैं। ठीक है। सो आपका नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, वो तो इसका ये डिस्क्रिप्शन है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस के। जैसे कि मटेरियल कंजम्पशन कर रहे हो, तो वो मटेरियल कंजम्पशन हुआ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, तो उसका फील्ड स्टेटस G003 है। ओके। बैंक
के GL मेंटेन कर रहे हो तो उसका फील्ड स्टेटस G005 है. So according to the nature of transaction, सिस्टम SAP ने डिजाइन किए हैं ये फील्ड स्टेटसेस. तो ये कोई और पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का ये जो कोड होता है ये उसको फील्ड स्टेटस ग्रुप बोलते हैं? नहीं नहीं, इस डिफाइन करिए ना, फील्ड स्टेटस ग्रुप इसका डेफिनेशन क्या है, ये क्या है? लास्ट क्लास अटेंड की है आपने? लास्ट कल थी। नहीं, हाँ लास्ट, 21st को थी. हाँ वो तो किया था। तो उसमें तो डिफाइन किया है फील्ड स्टेटस ग्रुप. अच्छा। फील्ड स्टेटस ग्रुप बेसिकली ये डिफाइन करता है कि ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन पोस्टिंग्स कौन से फील्ड सप्रेस होंगे, कौन से फील्ड्स. ओके, एक डेमो ही दे देता हूं आपको. अभी ये एक कस्टमर इनवॉइस है. सो यहाँ पे ये कंट्रोल होता है कि ये जो आपको फील्ड्स, डेटा फील्ड्स दिख रहे हैं, सो फील्ड स्टेटस ग्रुप ये कंट्रोल करता है कि आपने फील्ड स्टेटस ग्रुप यहाँ पे इनको असाइन कर दिया है G029. तो फील्ड स्टेटस ग्रुप में ये डिफाइन होता है कि ये जो फील्ड्स आपको दिख रहे हैं ये डॉक्यूमेंट हेडर लेवल है, ये डॉक्यूमेंट आइटम लेवल है, ये उसके एडिशनल फील्ड्स है, एडिशनल अकाउंट असाइनमेंट्स. सो इसमें कौन सी फील्ड में डेटा रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड मतलब मैंडेटरी, आपने वो डेटा एंड यूजर जब तक डेटा फीड नहीं करता वो पर्टिकुलर फील्ड में आगे प्रोसेस नहीं होगा ट्रांजैक्शन. ओके, जैसे अभी ये फील्ड है कंट्रोलिंग एरिया, हमने अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो ये फील्ड डेटा एंट्री के लिए ब्लॉक है, इसे बोलते हैं सप्रेस. तो ये ब्लॉक है. कुछ फील्ड्स है वो यहाँ पे डिस्प्ले ही नहीं होंगे, अगेन इट इज कॉल्ड सप्रेस. सो ये कंट्रोल करता है फील्ड स्टेटस, और ये इन रिलेशन टू GL लेजर मेंटेन होता है. कि पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आप कैसे रिकॉर्ड करोगे थ्रू GL जनरल लेजर. तो जनरल लेजर के लिए क्या फील्ड स्टेटस आपके लिए रिक्वायर्ड है, कौन सी फील्ड में डेटा एंट्री रिक्वायर्ड है, वो कंट्रोल करता है फील्ड स्टेटस ग्रुप. क्लियर? ओके। So now here you can see the hierarchy for a different company code. So you have created your first general ledger GL account. So go to this button, change company code, and here you have to change the company code, and now it will show you the groups for your company code. So the next GL that we will maintain is purchase account. So our expense group starts with 4 lakh. So I will assign that number. Primary purchase is also a primary cost. Account group expense, purchase account, purchase account. Go to control data, sort key 001, then create bank interest. Here you can give the field status as G001 general. For those GL accounts which you SAP have not specified a particular field status group, you can select the field status group as general. जो ट्रांजैक्शन के लिए या फिर जो जनरल लेजर के लिए SAP ने स्पेसिफिक फील्ड स्टेटस ग्रुप डिफाइन नहीं किया है, उसके लिए आपको
जनरल, ये फील्ड स्टेटस ग्रुप सिलेक्ट करना है जनरल, that is G001. Then press enter and save. Next GL that we will define is, again we'll define a GL under expenses. So if you collapse this, you will know the last number that is used for GL account under expense group. So go to create, and here now you have to enter the next number in the number series for expense group. Primary cost or revenue, expense. So I will enter rent expense. Control data, sort key 001, create bank interest, field status group G001. Press enter, then save. So now we'll create a GL for sundry debtors. So we will create the GL under group assets. So it starts with 2 lakh. So enter 2 lakh. And since I have defined the number series of 6 digits, so I have to maintain the number for GL account within this number series and which is of 6 digits. मैंने 6 डिजिट के लिए मैंने अपने GL नंबर जो रेंज है वो 6 डिजिट डिफाइन की है, तो इसी के अंदर 6 डिजिट नंबर मुझे मेंटेन करना है फॉर माय GL अकाउंट. This is the balance sheet account. Group is asset and is sundry debtors. Sundry debtors. Continue. Sort key 001. And here we have to maintain an additional customization that is called reconciliation account for account type. And for sundry debtors, the reconciliation account for account type is customers. Then the field status group is for reconciliation account is G067. Press enter and then save. So what is a reconciliation account? That I will explain through an example. So when you enter a transaction between with a customer, like you post a sales invoice with customer, the basic in the first transaction, the journal entry will be customer account debit and sales account credit. Here it is sales account. We have just prepared a GL. Okay. But for customer account, the customer account is not a general ledger. It is a master record. So we need to post the transaction posted on this master with this master record to a general ledger so that we can have the double effect of this uh, on the our financial statements for this transaction posted. So
what happens when you post a transaction on with the customer for sales or the incoming payments. Same case in incoming payments, the bank account will be debited and customer account will be credited. But what happens that when you post a transaction with the customer account and you have maintained a relationship, that is reconciliation account for account type customers with this general ledger sundry debtors, then system automatically post a transaction on the general ledger sundry debtors. And सर सर इसे थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिए ना, हाँ, ये जो मुझे पहले कस्टमर। इंग्लिश में खत्म करने दीजिए. ओके। So, so this entry will be automatically posted by the system so that these transactions will have a, a debit and credit effect on the general ledgers. So this is called a reconciliation ledger, where the transaction posted on customer account, that is master record, master data, this system automatically records the transaction on. At the same time, system automatically records the transaction on the general ledger sundry debtors. With this, the it also it records all the transactions that is you posted on the customer account with all your customers. So it records a consolidated balance on a GL, and this GL balance will reflect in the balance sheet under the current assets as sundry debtors, where it contains the consolidated ledger balance of all your transactions that you are posted on customer account. So this is called the reconciliation account. Reconciliation account क्या होता है? जब आप कस्टमर के साथ ट्रांजैक्शंस एंटर करते हो, सेल्स इनवॉइस आप पोस्ट करते हो, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या है? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. यहाँ पे क्या हो रहा है? सेल्स अकाउंट जनरल लेजर है, लेकिन कस्टमर अकाउंट जनरल लेजर नहीं है. सो यू नीड, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपडेट करने के लिए आपको सेकंड जनरल लेजर की जरूरत होगी, जीएल की. सो इन दिस केस सिस्टम ऑटोमेटिकली एंट्री पोस्ट करता है ऑन सन्ड्री डेटर्स. इंस्टेड ऑफ कस्टमर, सिस्टम ऑटोमेटिकली डेबिट करता है सन्ड्री डेटर्स जीएल, जो ट्रांजैक्शन कस्टमर अकाउंट पे रिकॉर्ड होता है. तो उसे कहा जाता है रिकंसिलिएशन अकाउंट. क्लियर? सो वो जो हम लोग ने बैंक में पढ़ा है, बैंक रिकंसिलेशन, ये वो वाला रिकंसिलेशन, नहीं नहीं, ये पोस्टिंग यहाँ होती यहाँ पे भी है। ट्रांजैक्शन पोस्ट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स. वही जो सन्ड्री डेटर्स ने जो पेमेंट किया है वो बैंक डेबिट इसलिए हो रहा है यहाँ पे, बैंक तो डेबिट ही होगा ना, क्योंकि वो पैसा अगर कस्टमर ने दिया है, पैसा तो इन हो रहा है. हाँ, तो इसके लिए वही सेम एंट्री के लिए, सेम कस्टमर के लिए, राइट? यस, सेम कस्टमर के लिए. तो इसके लिए इसको सो जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन, हम्म, अगर आप कस्टमर क्रेडिट मेमो भी पोस्ट करते हो, तो आप पोस्टिंग का बेसिक जर्नल एंट्री क्या है? कस्टमर अकाउंट टू सेल्स अकाउंट यस, और सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट इन केस ऑफ कैश, सॉरी, व्हाट यू से, या व्हेन वी हैव मेड द, यू रिटर्न द गुड्स. आप गुड्स रिटर्न करोगे तब कस्टमर क्रेडिट होगा और हाँ, सेल्स अकाउंट डेबिट होगा. और जब हम बट लोग इन पेमेंट कैश में रिसीव करेंगे तब भी तो कस्टमर क्रेडिट होगा।
हाँ, तो वो ट्रांजैक्शन पे भी आप सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन पोस्ट करेगा ऑन सन्ड्री डेटर्स। Okay. कोई भी ट्रांजैक्शन आप कस्टमर के साथ एंटर करोगे, सिस्टम ऑटोमेटिक एंट्री पोस्ट करेगा। So that's called reconciliation. It is called a reconciliation account. Okay, thank you. Reconciliation जैसे account, जैसे सर हम लोग डेटा का रिकॉन्सिलेशन करते हैं, डेटा रिकॉन्सिलेशन करते हैं किसी भी पार्टी, पार्टी इन द सेंस कस्टमर हो गया ना, हम्म, कस्टमर पार्टी, ठीक है सर। यस, यस, तो हम लोग पार्टी को, जैसे मैं हमने माल सेल किया तो हमारे पास पैसा आएगा, कस्टमर से आया या पार्टी से आया, हम्म, पैसा आया, ठीक है। हम्म। कस्टमर मतलब ये मतलब हम लोग जो जनरल लेजर जो समझते हैं वो कस्टमर नहीं, इसका थोड़ा सा सैप में दूसरे टाइप का ये वही चीज है ना सर। कस्टमर मास्टर रिकॉर्ड है हाँ मास्टर रिकॉर्ड है भाई। और जनरल लेजर नहीं है, तो जनरल लेजर कौन सा होगा? सन्ड्री डेटर्स होगा। और रिकंसिलिएशन अकाउंट पे आप डायरेक्ट एंट्री पोस्ट नहीं कर सकते। यू कैनॉट पोस्ट द ट्रांजैक्शन डायरेक्टली ऑन रिकंसिलिएशन अकाउंट, इट विल बी पोस्टेड ऑटोमेटिकली। क्लियर? So this is what is mentioned in this description, in this explanation. So now we will create another account under the assets, that will be the bank account. Continue. Balance sheet, assets. This bank GL account will be of the customer's bank account with the bank. Okay, with the bankers. कस्टमर की कंपनी का बैंक अकाउंट कौन से कंपनी बैंक में है, वो बैंक का नाम से जीएल बनेगा। कंट्रोल डेटा, सॉर्ट की 001, पोस्टिंग डेट, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, फील्ड स्टेटस ग्रुप, बैंक के लिए है G005, बैंक अकाउंट्स। डबल क्लिक ऑन इट, प्रेस एंटर एंड सेव। कंटिन्यू। So the last group will be the liabilities. Create। सर हाँ बोलिए। सर एक बार एसेट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर सर जैसे आपने अभी ये 2 लाख के लिखा हुआ है जीएल अकाउंट, और ये 2 लाख 1, ठीक है। हम्म, अब मैं कोई एंट्री अगर पोस्ट करता हूँ इसके अंदर, तो हम्म। ये मेरा सिर्फ जीएल नंबर है या ये मेरा सीरियल नंबर भी मेंशन होकर के आएगा मेरी एंट्री में? थोड़ा इलाबरेट करेंगे आपका क्वेश्चन? जैसे मेरे पास कोई इनवॉइस पोस्ट कर रहा हूँ, हम्म, ठीक है, तो उसका जो मुझे ऑटोमेटिक जनरेटेड सीरियल नंबर मिलेगा मुझे हम्म, एसएपी के अंदर, हम्म, जैसे अपना टैली के अंदर क्या होता है, वहाँ पे टैली का नंबर दे देता है वो, जो भी हमारा हम्म, पोस्टिंग नंबर होता है, हम्म। तो वो इसी ड्यूरेशन के अंदर देगा, मतलब सीरियल नंबर मेरा 2 लाख 1 2 3 4 5 नहीं, ऐसे करके, या ये सिर्फ नहीं। मेरा जीएल है फाइंड करने के लिए कि किस लेजर में या किस कॉस्ट सेंटर के अंदर क्या बैलेंस है, क्या क्या ड्राइव कर रहा है? आप टैली में डेटा पोस्ट करते हो तो आपको आपके रेफरेंस नंबर, जी मेरा मतलब है आप रेफरेंस नंबर बेसिकली। मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। हम्म, कंफ्यूजन भी मुझे समझ में आ गया है। लेट मी एक्सप्लेन। आप जब ट्रांजैक्शन पोस्ट करोगे तो वो डॉक्यूमेंट का नंबर होगा जो आपने डॉक्यूमेंट टाइप को असाइन किया है। ओके, ओके। आप ठीक। टैली में जब डेटा पोस्ट करते हो हम्म, तो टैली में क्या होता है, आप आपको जनरल लेजर का नाम दिखाई देता है। जी, एसएपी में आपको नंबर दिखाई देगा।
ओके ओके, एसएपी got में it. सारा डेटा नंबर्स में मेंटेन Numbers होता है. में ओके, no. Okay, now I got it. सर एक मेरा क्वेश्चन है, हाँ बोलिए. जैसे अभी आपने कोटक बैंक का खोला असेट में, यदि इसका नेचर ओडी अकाउंट होता तो सर इसको मतलब आप फिर लाइबिलिटी में ले जाते इसको? कौन सा खुलेगा लायबिलिटी में बैंक का अकाउंट? यदि इस ये वाला कोटक बैंक यदि मेरा ओडी अकाउंट होता, हाँ तो लायबिलिटी में खुलेगा. लाइबिलिटी में खुलेगा, तो यस. सर ये उसके अंदर भी ये फील्ड स्टेटस ग्रुप 0005 भी लेंगे? हाँ, फील्ड स्टेटस तो सब में वही रहेगा, बैंक अकाउंट ही रहेगा. बाई चांस सर अपन ने किसी में गलत ले लिया तो उसको एडिट कैसे किया जाएगा? ये जीएल सिलेक्ट करो, ये हम्म, चेंज बटन है, उस पे जाओ, एडिट मोड में ओपन हो जाएगा. फील्ड पे जाओ, यहाँ से फील्ड स्टेटस चेंज करके सेव कर दो, हो गया. ठीक है सर, थैंक यू सर। ये भी हम आगे करने ही वाले हैं. कुछ कुछ फील्ड्स के स्टेटस, जीएल के स्टेटस हमें चेंज करने हैं. डेट फील्ड स्टेटस नहीं चेंज होगा, अ, कुछ और फील्ड्स इसमें एडिट होंगे किसी पर्टिकुलर जीएल में, तो तभी मैं एक्सप्लेन करने ही वाला था. ठीक है, अभी एक्सप्लेन हो गया कि कोई जीएल कैसे चेंज करना है. कुछ सवाल है कि आगे बढ़े? नहीं सर, Okay. So now we'll create GL for liability group. It starts with 1. Save. Balance sheet account, liabilities group, then sundry creditors, and control data. Reconciliation account type for account type vendors or suppliers. Sort key 001. Then create bank interest, field status group G067. Reconciliation accounts. Execute this, press enter and save. Sundry debtors, sundry creditors दोनों GL का concept same है. Okay, this is for customers, this is for vendors. So GL creation clear है? हेलो. हाँ सर क्लियर है। ओके. सर एक चीज और पूछनी है, हाँ बोलिए. अगर किसी के जैसे नाम पे मुझे मेरा किसी के नाम के लिए मुझे जनरल लेजर बनाना है तो वो भी सेम प्रोसीजर है उसका, या उसका कुछ हाँ, अलग तरीका प्रोसीजर सेम है. मतलब आप आपके जो एम्प्लॉइज है उनको एज ए क्रेडिटर दिखाना चाहते हो, रहता या फिर आपको जैसे ये अपने अकाउंट ग्रुप है, है? यहाँ पे आपको एक नया अकाउंट ग्रुप क्रिएट करना होगा, पर्सोनेल अकाउंट्स, पर्सोनेल्स करके. यहाँ पे ओके होगा भी, देखो, शायद यहाँ पे हो सकता है किसी ने बनाया होगा, बट आपको उसको डिसाइड करना है आप किसके अंडर बनाना चाहते. ये देखो, पर्सोनल एक्सपेंडिचर्स, तो ये इन्होंने एक्सपेंस के ही अंडर बना दिया है. एक्सपेंस का उनका एक अलग से सीरीज किया है अभी. देखो सारे एक्सपेंस के आपको 27, 25, 26 इससे ही दिखेंगे. ओके, सो आपको नंबर सीरीज आपका एक्सपेंस का ही होना चाहिए. सो आप पर्सनल एक्सपेंडिचर करके ग्रुप बनाओ, उसके अंडर जीएल मेंटेन करो. क्लियर? ओके सर। So now we will see what is document splitting. For document splitting, uh, when you post a transaction, say you have posted a transaction called rent expense
debit, and bank account credit. So the category of this GL will be expense, and category of this GL will be assets or balance sheet accounts. So what happens when you specify GL accounts for document splitting? The system then splits these transactions on the according to the category of their uh, the transaction category. So rent expense, it will split as expense, and the and this posting will be posted as balance sheet item. So with this categorization, system will categorize uh, the nature of transaction posted. So it will update on expense account and it will update on balance sheet side. It will update the expense side of your income and expense statement, and it will update the uh, balance sheet side, depends on asset or liability. So this is called the document splitting. The debit and credit in a total means uh, a document. डेबिट और क्रेडिट मिला के एक डॉक्यूमेंट होता है. डेबिट पोस्टिंग एंड क्रेडिट पोस्टिंग मिला के एक डॉक्यूमेंट होता है. और डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग में जब आप स्पेसिफाई करते हो कि कौन से एक्सपेंस जो जर्नल लेजर्स है उनकी कैटेगरी क्या है, एक्सपेंस है या बैलेंस शीट अकाउंट है, रेवेन्यू है, तो जब ट्रांजैक्शन पोस्ट करेगा एंड यूजर, तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन सिस्टम ट्रांजैक्शन को स्प्लिट करेगा. इससे क्या होगा, आप स्पेसिफिक रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हो. आपको अगर आप एक्सपेंस रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हो तो ये डॉक्यूमेंट में से आपको एक्सपेंस पार्ट ही सिस्टम दिखाएगा, आपको बैंक पार्ट नहीं दिखाएगा रिपोर्ट में. सो ये चीज ये ऑटोमेशन के लिए या ये क्लासिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग मेंटेन किया जाता है. और ये मेंटेन होता है, इंडिविजुअल जीएल के लिए मेंटेन नहीं होता. आपके जो अकाउंट ग्रुप के नंबर सीरीज है, वो नंबर सीरीज के लिए डिफाइन किया जाता है. So is it will be defined that I will demonstrate to you. And to define the document splitting, we have to follow this menu path. So we'll go to SAP, that is SPRO, SAP reference IMG, then financial accounting, general ledger accounting, business transactions, document splitting, classify GL accounts for document splitting. Execute this, enter your chart of account, continue, go to new entries. Here you have to define your number range interval for your account groups. So we will define each of this account group and their category of the transaction. So first we'll define one group for our liability, and system defines it as balance sheet account. Your liability side will be a balance sheet account item. So select it. Then next category is asset.
Again, it is a balance sheet account. Then it is our revenue accounts. So the category is revenue, that is 30,000. Then for expense, the category is expense. And the fifth group that we have defined is secondary cost elements. If it is not defined, then you can define it under expense. Press enter. So now we have defined the document splitting categories. When a GL will be posted under, within, any transaction is posted through GL account, the number which is maintained within this number is series. So now according to this category, system will split the document that is posted, debit entry and credit entry. जब भी आफ्टर ये कॉन्फ़िगरेशन के बाद जब भी एंड यूजर ट्रांजैक्शन पोस्ट करेगा इनमें से कोई भी नंबर सीरीज के जीएल में, तो जो कैटेगरी हमने असाइन किया है अकॉर्डिंगली आपका डेबिट एंड क्रेडिट लाइन आइटम स्प्लिट हो जाएगा. अगर एक्सपेंस कैटेगरी है तो एक्सपेंस कैटेगरी में जाएगा, बैलेंस शीट कैटेगरी है तो बैलेंस शीट कैटेगरी में जाएगा, both the debit and credit. So this is what is called document splitting. Now we will discuss the basic customizations for the controlling module. So the first thing that we need to maintain in controlling area is the maintain controlling area. All your uh, customizations related to management of cost and profits are maintained under the controlling area. Like all your general ledgers, all your account groups in financial accounting are maintained under chart of accounts. Similarly, all the customizations that are required to be created so that you can maintain the manage the cost and profits for internal reporting, all those customizations are maintained under controlling area. जैसे आप चार्ट ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंडर अकाउंट ग्रुप क्रिएट होते हैं, अकाउंट ग्रुप के अंडर जनरल लेजर्स क्रिएट होते हैं. सिमिलरली कंट्रोलिंग एरिया एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है जिसके अंडर आपके कस्टमाइजेशंस मेंटेन होते हैं, मास्टर डेटा मेंटेन होता है फॉर कंट्रोलिंग मॉड्यूल to record the cost and profits. There is a one-to-many relationship between controlling area and company code. So many company codes can be assigned to a single controlling area. If you have a requirement of consolidated reporting under the corporate group for all your company codes, then, and if you want that for all your company codes within the corporate group, you want to maintain the same controlling area, then that relationship with the is called one to many. When a single controlling area is assigned to many company codes. जब आपके कॉर्पोरेट ग्रुप के लिए
ये रिक्वायरमेंट होगा कि आप सारे कंपनी कोड्स के लिए एक सिंगल कंट्रोलिंग एरिया मेंटेन करो, तो वो रिलेशनशिप को कहा जाएगा वन टू मेनी। सो कंट्रोलिंग एरिया और कंपनी कोड के बीच में वन टू मेनी रिलेशनशिप होता है। कंट्रोलिंग एरिया, अगर आप क्रॉस, इफ यू आर मेंटेनिंग द क्रॉस कंपनी कोड कॉस्ट अकाउंटिंग, it is used in group reporting where all your company codes are using different currencies, and now you want to maintain controlling area postings in for your corporate group reporting in a single currency, a common currency. So in that case, the system suggests that it should be maintained under the currency type 30, that is group currency as controlling area currency. Cost, cost company code cost accounting means where uh, the sale and purchase transactions are maintained between the two company codes within the corporate group. अगर एक ही कॉरपोरेट ग्रुप के दो कंपनी कोड के बीच में अगर सेल परचेस ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसे कहते हैं क्रॉस कंपनी कोड ट्रांजैक्शन। और कंट्रोलिंग एरिया के लिए अगर आप अगर ये रिलेशनशिप के लिए आप कंट्रोलिंग एरिया मेंटेन करना चाहते हो जहाँ पे आपके कॉरपोरेट ग्रुप के अंदर हर एक कंपनी कोड की करेंसी अलग है, तो एसएपी रिकमेंड करता है कि कंट्रोलिंग एरिया करेंसी, एक कॉमन करेंसी, ग्रुप करेंसी आपको मेंटेन करनी है। अगर आप if you are want to maintain the same controlling area for all your company codes, then the prerequisite is all the company code should use the same chart of account and same fiscal year variant. अगर आप आपके कॉरपोरेट ग्रुप के जो कंपनी कोड्स है उनके लिए सेम कंट्रोलिंग एरिया मेंटेन करना है तो उसके दो प्री रिक्विजिट्स है। फर्स्ट है सारे कंपनी कोड्स के ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट सेम होने चाहिए और सारे कंपनी कोड्स का फिस्कल ईयर भी सेम होने चाहिए। सो दिस इज व्हाट इज मीन्ड बाय द कंपनी कंट्रोलिंग एरिया। एनी क्वेश्चंस? सर बी ऑनेस्ट सब बाउंस हो गया सर के ऊपर से। बाउंस हो गया? सर एक बार और से एक्सप्लेन कर देना कुछ क्या अकाउंट होते हैं। आपके जो कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स के आप कॉस्ट सेंटर्स और प्रॉफिट सेंटर्स के जो रिपोर्ट्स है कंट्रोलिंग एरिया के लिए, उसके लिए जो आप मास्टर डेटा मेंटेन करोगे वो मास्टर डेटा आप असाइन करोगे फाइनेंशियल अकाउंट्स में जनरल लेजर को, तभी ट्रांजैक्शंस कैरी फॉरवर्ड होंगे टू कंट्रोलिंग मॉड्यूल। तो वो सारा डेटा मेंटेन होता है कंट्रोलिंग एरिया के अंडर। जैसे आपके जनरल लेजर्स मेंटेन होते हैं अकाउंट ग्रुप के अंडर, अकाउंट ग्रुप मेंटेन होता है चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर। सो आपके बेसिकली आप चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है? द लिस्ट ऑफ जनरल लेजर अकाउंट्स। सो सिमिलरली आपके जो कंट्रोलिंग मॉड्यूल के जो कस्टमाइजेशंस है वो मेंटेन होंगे अंडर कंट्रोलिंग एरिया। इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। आपके कॉरपोरेट ग्रुप में अगर मल्टीपल कंपनीज है और आपको सारे कंपनी कोड को सेम कंट्रोलिंग एरिया असाइन करना है तो उसे कहा जाएगा वन टू मेनी रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोलिंग एरिया एंड कंपनी कोड, बिकॉज वन कंट्रोलिंग एरिया इज असाइन टू मल्टीपल कंपनी कोड्स। अगर ये आपके बिजनेस
क्लाइंट की बिजनेस रिक्वायरमेंट है तो आप ये कर सकते हो। अगर आप क्रॉस कंपनी कोड कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हो, यानी कि एक ही कॉरपोरेट ग्रुप के दो अलग कंपनी कोड्स में या मल्टीपल कंपनी कोड्स में सेल परचेस ट्रांजैक्शन हो रहा है और सबके कंपनी कोड की करेंसी अलग है, तो एक कॉमन, तो आपके कॉरपोरेट ग्रुप के कॉस्टिंग रिपोर्टिंग के लिए, प्रॉफिट सेंटर रिपोर्टिंग के लिए एक कॉमन कंट्रोलिंग एरिया करेंसी होनी चाहिए, और वो एसएपी रिकमेंड करता है करेंसी टाइप 30 एज ग्लोबल करेंसी और ग्रुप करेंसी एज कंट्रोलिंग एरिया करेंसी। यहां तक क्लियर है? जी सर। देन अगर आप ये मेंटेन रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हो कि आपके कॉरपोरेट ग्रुप के सारे कंपनी कोड्स के लिए सेम कंट्रोलिंग एरिया मेंटेन करना है, तो उसके दो प्री रिक्विजिट्स है। एक है सारे कंपनी कोड्स का ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट सेम होना चाहिए, और दूसरा रिक्वायरमेंट है सारे कंपनी कोड्स का फिस्कल ईयर सेम होना चाहिए। तो क्लियर टिल नाउ? ओके। सो कंट्रोलिंग एरिया मेंटेन करने के मेथड है। एक मेथड है या तो जो बाय डिफॉल्ट कंपनी कोड दिया हुआ है 001, वो कंट्रोलिंग एरिया कॉपी करो और उसको रीनेम करो और उसके प्रॉपर्टीज आप यूज करो। द सेकेंड मेथड इज you can create your own controlling area. There are two methods to define the controlling area or maintain the controlling area. One is through enterprise structure. This is, it has its own menu path and the transaction code is OX06. And if you go to controlling module node, then this is the menu path and the transaction code is OKKP. So we'll follow the controlling module path. So we'll go to SAP. The menu path is display IMG, controlling, general controlling, then organization, maintain controlling area. Execute this. We are maintaining the fresh controlling area, so double click on maintain controlling area. Go to new entries. If your controlling area is same as your company code, means there is no cross company code cost accounting. You have, you don't have a group company code, group company, then you can select the controlling area code as your controlling area is same as your company code. अगर आप आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप कंपनी क्रिएट करो ग्रुप रिपोर्टिंग के लिए, और उनके बीच, वो कंपनी कोड्स के बीच कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं है, या फिर सिंगल कंपनी कोड है जिसके लिए आप कस्टमाइजेशंस कर रहे हो, तो यू कैन सिलेक्ट company code controlling area as same as controlling company code. But we are going to use the cross company code cost accounting, so we will create a separate controlling area. Give the name controlling area for DL4. Here you have to maintain the relationship between the company code and controlling area. So if you do not want to maintain a group reporting, then you can select controlling area same as company code. अगर आप ग्रुप रिपोर्टिंग मेंटेन नहीं करना चाहते हो तो आपको सिलेक्ट करना है कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड। सो और अगर ग्रुप रिपोर्टिंग है then select cross company code cost accounting. Then in this case you have to define the currency type as 30
that is group currency. This currency is maintained at client level, means when the client 100 is configured for, then it is defined as USD. So by default, therefore system have maintained is as USD, and our company's currency is USD. Our group company's currency is USD. So we are okay with it. If your corporate group currency is different, then you can change the currency over here. Then सर जो assign, बोलिए। जो हमने स्टार्टिंग में ग्रुप बनाया था इस हम्म कंपनी के लिए, तो उस टाइम जो हमने करेंसी डाली थी वो यहाँ पर जरूरी तो नहीं है कि वो यूएस में ही रहे, क्योंकि हमने इसका एक जो हमारा ग्रुप था वो यूएस में करा था ना, लंदन में। सी, हमारी कॉरपोरेट ग्रुप कंपनी यूएस में है, वहाँ की करेंसी यूएसडी है, तो ये जो डिफॉल्ट करेंसी क्लाइंट लेवल पे सेट हुई है, ये हमारी सेटअप से मैच करता है। अगर मेरे ग्रुप कंपनी यूरो है तो यहाँ से मैं यूरो सिलेक्ट करूंगा, मेरी कंट्रोलिंग एरिया करेंसी ग्रुप करेंसी यूरो हो जाएगी। क्लियर? ओके। देन एंटर योर चार्ट ऑफ अकाउंट, देन हेलो फिस्कल ईयर वेरिएंट। हेलो यस, सर, जो यूएसडी डाला है, मतलब जो डॉक्यूमेंट करेंसी, मतलब जो अपन जिस कंट्री में काम, जिस कंट्री का काम कर रहे हैं, उस कंट्री का करेंसी डालने का है क्या उधर? नहीं, ये ये कंट्रोलिंग एरिया करेंसी है। आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपको ग्रुप अकाउंटिंग के लिए मैनेजमेंट रिपोर्ट्स कौन सी करेंसी में जनरेट होंगे? अच्छा, मतलब अगर बैलेंस शीट यूएसडी में सबमिट करने का, तो ग्रुप करेंसी 30 डाल के यूएसडी डालने का है, अगर यूरो रहेगा तो 30 डाल के यूरो डालने का, ऐसा है क्या? यस। ओके। देन cost center standard hierarchy. Cost center standard hierarchy means it is the hierarchy that you maintain to define your level of your cost centers. कॉस्ट सेंटर स्टैंडर्ड हायरार्की आप डिफाइन करते हो ताकि इसके अंडर आप डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स डिफाइन कर सको, उनके ग्रुप्स डिफाइन कर सको और एक हायरार्की डिफाइन कर सको। एक क्या बोलते हैं उसको, एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर सको कि कैसे कॉस्ट सेंटर्स आपने मेंटेन किए हैं, उसे कहा जाता है कॉस्ट सेंटर स्टैंडर्ड हायरार्की। एंड टू नेम इट, द नेम कन्वेंशन इज cost center standard hierarchy underscore your controlling area code. Press enter. System will ask you that this hierarchy doesn't exist. Do you want to maintain? Then click yes. Clear? सर ये CCSH लिखना जरूरी है? Yes, this is the standard naming convention. ओके सर। Then you have to double click on activate components or control indicators. So double click on it. Again, this message will pop up. Click yes again. Go to new entries. Here we will define from which year you want to maintain the controlling area components, or you want to activate the components of controlling area. So we'll enter the fiscal year, that is our starting fiscal year. Then
Do you want to activate the cost centers? Select component active, then select this checkbox also. Order management. Do you want to maintain the orders? Means the purchase order, sales order, internal orders. Okay. It's basically used for internal orders. So do you want to activate? Yes, we want to activate. Other things will remains as it is. Then select project, sales order, cost objects, and then press enter. So here you have defined what are the cost objects that you want to maintain so that you can maintain the cost centers reports, and which is helpful for management to take the managerial decisions, or you can further classify your costs that you have incurred to manage your business. You can, for that you can activate these components. यहाँ पे हमने कुछ कंपोनेंट्स एक्टिव किए हैं फॉर कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, ताकि आप कॉस्ट रिकॉर्ड कर सको फॉर सेल्स ऑर्डर, कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स, ये सब ऑब्जेक्ट्स के लिए, और मैनेजमेंट को एक ड्रिल डाउन रिपोर्ट मिले और मैनेजमेंट मैनेजरियल डिसीजंस ले सके. एनी क्वेश्चंस? सर वैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बट बस मैं ये जानना चाहता हूँ, ये कमिट मैनेजमेंट और एक्टिव बेस कॉस्टिंग जो है, ये किस केस में एक्टिव करना पड़ता है हम लोगों को, अगर करना पड़ा तो? कमिटमेंट मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? अ, जैसे कि आप एक कुछ कमिटमेंट्स लेते हो, मतलब अगले साल मुझे इतना सेल करना है. ओके. तो वो आप उसका एक लिस्टिंग करते हो कि मुझे अगले साल कितना सेल करना है, हर एक पोस्टिंग पीरियड वाइज कितना सेल करना है, और फिर एक्चुअल सेल्स उसके सामने आप कंपेयर करते हो कि जो आपने कमिटमेंट्स दिए थे वो आपने उसके सामने कितना सेल किया है. सो ये एक मैंने एग्जांपल लिया है कि लाइक कैसे बजट, कमिट. बजट टाइप, जैसे साल में इतना हमको सेल करना है, या ये मेरा बजट है. यस. और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होता है? आप एक आपके प्रोडक्शन साइकिल में पर्टिकुलर एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कि आपने एक कोई कंपोनेंट मैन्युफैक्चर किया, तो वो एक एक्टिविटी हो गया. आपने कुछ मटेरियल आउटसोर्स किया है, तो वो एक एक्टिविटी हुआ. तो उस अगर वो हर एक एक्टिविटी का अगर आपको कॉस्टिंग मेंटेन करना है, तो उसके लिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग आपको, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक्टिवेट करना है. ओके. सर जस्ट लाइक ट्रेडिंग. जस्ट लाइक ट्रेडिंग. नॉट ट्रेडिंग. मान लो आपने एक कार, आपके क्लाइंट एक कार मैन्युफैक्चरर है, ओके. उन्होंने एक एसयूवी बनानी है. तो असेंबली लाइन पे हर एक पार्ट्स असेंबल होता है. ओके. ओके. पार्ट्स इन हाउस बन रहे हैं. ओके. तो अगर एक डोर बनाना है, तो वो डोर बनाना एक एक्टिविटी हो गया. कार का डोर एक जी जी. एक्टिविटी हो गया. ओके. तो वो कार का डोर बनाने के लिए कितना कॉस्टिंग पड़ा, ओके. कार का बोनेट बनाने के लिए कितना कॉस्टिंग पड़ा, तो उसे बोला जाता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. ओके सर, गॉट इट. ओके. क्लियर? यस सर. Okay. So now the next part we have to define assignment of company code. Double click on this, go to new entries, and here you have to define for which company codes
within your corporate group you want to assign this controlling area. यहाँ पे आपको ये डिफाइन करना है कि आपके कॉरपोरेट ग्रुप के अंडर कितनी कंपनी कोड्स को आपको ये सेम कंट्रोलिंग एरिया असाइन करना है. So in our case, there is only one company, that is DL4 press enter. अगर So इसके yes, जैसे अभी कंट्रोलिंग एरिया के लिए अगर मुझे एक और सपोज हम एक और कंपनी बना लेते हैं DL5 करके, तो हम वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं. yes. तो अगर उसके दोनों के लिए मुझे एक ही कंट्रोलिंग एरिया मेंटेन करना है तो ओके, दोनों कंपनी में किसी भी चीज की पोस्टिंग वगैरह होगी, मैं एक अपना टी को उसके कंपनी कोड के थ्रू दोनों कंपनी की डिटेल निकाल सकता हूँ. yes. ओके. So now we have assigned the company code to the controlling area. From this customization, whenever any customization or any master data will be created under this controlling area, this company code will be auto assigned to that customization. Pay attention to this statement again because I will ask questions on in the one of the customization. I will ask you this question. Whenever now, since we have assigned our company code under the controlling area DL4, so whenever any customizations are maintained under this controlling area, for those customizations and master records, our controlling our company code will be all those customizations and company master records will be auto assigned to our company code because of this relationship. हमने कंट्रोलिंग एरिया और कंपनी कोड के बीच रिलेशनशिप मेंटेन कर दिया है. सो अब कोई भी कस्टमाइजेशन, कोई भी मास्टर डेटा ये कंट्रोलिंग एरिया पे क्रिएट होगा तो वो मास्टर डेटा को उस कस्टमाइजेशंस को ये कंपनी कोड ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा. क्लियर? सर सर अभी हम लोग ने क्या किया है, कंट्रोल एरिया का नाम भी कंपनी कोड का ही नाम लिखा है और कंपनी कोड का भी नाम DEL4 ही है. तो कंट्रोलिंग एरिया का नाम अपन चेंज कर सकते हैं क्या जब भी करने का है तो, क्योंकि कंफ्यूजिंग अभी तो ऐसा हो रहा है. देखिए यहाँ पे मैंने बहुत पहले सेशन में ही बात की थी कि मल्टीपल कोड्स मेंटेन करने से अच्छा और याद रखने के लिए से अच्छा है आप एक ही कोड मेंटेन करो सारे कस्टमाइजेशंस को नाम देने के लिए. ये रीजन है. अच्छा, लेकिन आपको अलग देखिए आपको हर एक कस्टमाइजेशन को अलग नाम देना है जो आपकी कंपनी कोड से आइडेंटिकल ना हो. आप दे सकते हो बट देन आपको ये सारे जो नाम है, जो सारे ये कोड्स है आपको याद रखने होंगे या फिर आपको एक डेटा शीट बना के रखना होगा कि कौन से कस्टमाइजेशंस के लिए मैंने क्या कोड दिया है. ओके ओके. So click on save. System will prompt you a message that you have added an additional FI currency to company code. यहाँ पे सिस्टम आपको एक पॉपअप देगा कि आपने कंपनी कोड के लिए एक एडिशनल करेंसी डिफाइन की है. कंटिन्यू, क्रिएट रिक्वेस्ट, मेंटेन
controlling area. Save and continue. हेलो हेलो Yes, yes. सर, ये इसमें एक आपने जब भी वो कंट्रोलिंग एरिया का बात किया था उसमें प्रॉफिट सेंटर और कॉस्ट सेंटर की बात किया था। तो जो एंड यूजर जब भी एंट्री यूज करेगा तो उसमें प्रॉफिट सेंटर और कॉस्ट सेंटर का जो को मतलब मैं अभी एज ए एंड यूजर काम कर रहा हूँ तो उसमें प्रॉफिट सेंटर और कॉस्ट सेंटर के लिए पूछा जाता है क्या? तो वो क्रिएट करने का वो अलग है ना, ये जो चीज बात कर रहे हो टोटली अलग है यस, अलग है। वो ना? हम अभी वही टॉपिक सीखेंगे। ओके ठीक है। बेसिक सेटिंग्स कंट्रोलिंग एरिया के वही है, वो पार्ट है बेसिक सेटिंग्स का। Then the next settings that you have to maintain is maintain versions in controlling area configuration. Here the default version that SAP provides is 0 to maintain the plan or actual data. Here you can define the plan or budgeted figures for any of your costs, any of your expenses, and you can compare it with your actual expenses, and you can analyze the variances. The variances means the difference between the plan figures and actual figures. So this version will give you an access to maintain the plan and plan versus actual data relationship, to uh, analyze the variances for a particular expense or particular, you can say, activity. For that reason you have to maintain the version for controlling area. SAP एक डिफॉल्ट वर्जन डिफाइन करता है, दैट इज 0, जिससे आप कोई भी एक्टिविटी के लिए प्लान वर्सेस एक्चुअल फिगर्स कंपेयर कर सकते हो। आप प्लान फिगर्स मेंटेन कर सकते हो, यानी कि बजटेड फिगर्स मेंटेन कर सकते हो कि पर्टिकुलर एक्सपेंस या पर्टिकुलर इवेंट के लिए पर पोस्टिंग पीरियड कितना बजट एलोकेट करना है, कितना प्लान आपकी कॉस्ट है कि इतना कॉस्ट मुझे इनकर हो सकता है। जब उससे एक्चुअल कॉस्ट कंपेयर करना है, इतना एक्चुअल कॉस्ट हुआ है, उनके डिफरेंस को बोला जाएगा वैरिएंसेस। सो अगर आपको ये रिपोर्टिंग मेंटेन करना है आपके कंट्रोलिंग एरिया में, तो आपको ये वर्जन एक्टिवेट करना होगा आपके कंट्रोलिंग एरिया के लिए। सो ये मीनिंग है मेंटेन वर्जन्स इन कंट्रोलिंग एरिया कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? Yes, sir. So to maintain the controlling area, sorry, version in controlling area, this is the transaction code and this is the menu path. So we'll go to SAP. This is the node, maintain versions. Execute this. So this is the default version, that is 0. Here the plan, actual, WIP and variance, all the categories are marked. So you can have all these features, and if you do not want to use it, you want your own versions, you can create through new entries and maintain your specific requirements. Select this version and you have to double click on the folder settings for each fiscal year. So double click on it. You have to maintain the controlling area, and then the plan and the version will be 0. Continue.
Here, by default, it will maintain that from current fiscal year, including the current fiscal year, this plan data or this plan versus actual version will be defined for next 5 years. So first double click on this, your current fiscal year. Then for general indicators, activate integrate planning, and then orders or projects, you can activate the integrated planning for cost centers, business processes. Here you can have maintain the planning for your cost centers or profit centers, and with this you can maintain the plan versus actual figures for your internal orders. So that is the meaning of this two checkboxes and two activities. Clear? Then click on save. Do you want to execute this change version function in background? No. Create new request. Maintain versions for controlling area. Save and continue. So go back. Here, copying allowed means you can copy from plan figures to actual figures, you can copy from actual figures to plan figures. That we will discuss in detail when we discuss those topics. Then if all your variance analysis for the particular fiscal year is completed, then the versions are locked so that nobody can change the figures on this plan versions. So go back, can exit. The next thing that you need to maintain is the number ranges for controlling documents. So execute this, click on copy. From here, select the default controlling area and here enter your controlling area, copy, continue. It is copied. Now here enter your controlling area code and click on display intervals. So these number ranges and the number range intervals are copied. So when a data is carried from financial accounting to cost accounting, then the postings are made within this number range intervals. Or when you, so these number ranges are also used or particularly used for controlling area postings when you use the post the transactions through secondary cost elements. For that, you need to maintain the uh, CO document ranges. जब आप कंट्रोलिंग एरिया मॉड्यूल के लिए सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट से के थ्रू ट्रांजैक्शन पोस्टिंग होगी तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स रेंजेस यूज होंगे टू पोस्ट दी सीओ डॉक्यूमेंट कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट तो ये पर्पज है इसका क्लियर profit center accounting. So profit centers are usually maintained to
analyze the business performance of internal uh, you will say internal controlling areas, or means the internal business areas. So the profit centers can be your branch account, it can be your market segment, it can be your product segment. Means if you want to analyze the profitability of your a particular branch, we can take an example that, or any business function like sales, production, purchase account, and so you can analyze this through profit center accounting. So all your revenues and expenses are recorded on profit centers, which can be your branch account, which can be your business functions, and for that particular branch or what that particular business function or market segment, you can analyze the business performance. प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग इसके लिए मेंटेन किया जाता है कि आपके इंटरनल जो बिजनेस एरियाज है, जैसे कि आपके ब्रांच ऑफिसेस है, आपके बिजनेस फंक्शंस है, आपके मार्केट सेगमेंट्स है, तो अगर किसी पर्टिकुलर एरियाज के लिए अगर आप आपके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस कंपेयर करना चाहते हो, आप ये देखना चाहते हो कि ये मेरा पर्टिकुलर जो सेगमेंट है, जो पर्टिकुलर पार्ट है मेरे बिजनेस का, वो प्रॉफिटेबल है या नहीं। मैं कोई ब्रांच ऑफिस रन कर रहा हूँ, तो वो ब्रांच ऑफिस के रेवेन्यूज कितने हैं, उसके एक्सपेंसेस कितने हैं, और उनको कंपेयर करने के बाद वेदर वो ब्रांच कंटिन्यू रखना मेरे लिए फिजिबल है या नहीं। अगर प्रॉफिट्स इंप्रूव करने के लिए मुझे क्या करेक्टिव मेजर्स लेने होंगे, ये सारे डिसीजंस प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग के थ्रू मैनेजमेंट ले सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड दी प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग। क्लियर? Yes, sir. So for to activate or to maintain the profit center accounting, we have to do some customizations. So the first step is set controlling area, and this is the transaction code and menu path. So we'll go to SAP, and the menu path is display IMG, controlling, profit center accounting, then basic settings, then set controlling area. Execute this. So here you have to define that for which controlling area you are going to define the customizations and then maintain the master records at for the which controlling area. If in your system you are using multiple controlling areas, so till you log out, all the customizations are will be maintained for the controlling area DL4. सेट कंट्रोलिंग एरिया का मतलब ये होता है कि अगर आप मल्टीपल कंट्रोलिंग एरियाज में काम कर रहे हो, के लिए कस्टमाइजेशंस कर रहे हो, में मास्टर डेटा क्रिएट कर रहे हो, तो जब आप सेट कंट्रोलिंग एरिया करते हो, तो जब तक आप लॉग आउट नहीं करते, करंट सेशन लॉग आउट नहीं करते, तब तक आपके सारे कस्टमाइजेशन, सारे मास्टर रिकॉर्ड ये कंट्रोलिंग एरिया के अंडर सेव हो जाएंगे। The main and another purpose is for every customizations that you will do further, or the master records that you will do further after this customization, every time you don't need to select the controlling area. इसका और एक यूज है कि ये कंट्रोलिंग एरिया सेट करने के बाद आप जो भी कस्टमाइजेशंस करोगे, जो भी मास्टर डेटा मेंटेन करोगे,
हर एक्टिविटी के टाइम आपको कंट्रोलिंग एरिया सिलेक्ट करना नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट यही कंट्रोलिंग एरिया आपको दिखेगा जब तक आप लॉग ऑफ नहीं करते। क्लियर द मीनिंग ऑफ दिस कस्टमाइजेशन? Yes, sir. So click on save. So user have changed. Then the next customization, maintain controlling area settings for profit centers. So now we will define the controlling area settings for profit center. So this is the transaction code and this is the menu path. So the menu path is display IMG, controlling, profit center accounting, basic settings, controlling area settings, maintain controlling area settings. Execute this. Here we have to define the profit center standard hierarchy, like we have defined the cost center standard hierarchy. So here the naming convention is profit center standard hierarchy underscore your controlling area code. Profit center local currency type, it will be 90, that is profit center currency. Confirm. What is the profit center local currency? That is the currency of the country in where the company code is maintained. That is in our case it's INR. यहाँ पे हमें ये डिफाइन करना है प्रॉफिट सेंटर करेंसी का स्टैंडर्ड हायरार्की का नेमिंग कन्वेंशन। फिर हमें यह डिफाइन करना है कि प्रॉफिट सेंटर करेंसी का टाइप क्या होगा। इट इज 90, दैट इज प्रॉफिट सेंटर करेंसी। देन उसका लोकल करेंसी टाइप हमने डिफाइन किया, तो लोकल करेंसी कौन सा होगा, तो वो कंपनी कोड करेंसी होगा। स्टोर ट्रांजैक्शन करेंसी, select this. It means if the transaction is posted in the currency other than company code currency, then that transaction will also be considered for profit center accounting. अगर ट्रांजैक्शन करेंसी आपने किसी और करेंसी में ट्रांजैक्शन पोस्ट किया है जो कंपनी कोड करेंसी नहीं है, तो वो ट्रांजैक्शन भी प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग के लिए कंसिडर हो, इसके लिए आपको ये चेकबॉक्स सिलेक्ट करना है। वैल्यूएशन व्यू एएलई डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कोई चेंज नहीं करना है। देन एक्टिवेट इंडिकेटर्स सिलेक्ट करना है कि ये प्रॉफिट, ये जो इंडिकेटर्स है ये एक्टिवेट हो जाए। प्रेस एंटर। एनी क्वेश्चंस? Sir, I have a question. Yes. We are using transaction codes for each and every menu, right? And each is differing, like OK, EI, ES, like that. Is there any shortcut way to understand or to remember this transaction code? You can list out them, Okay. and with practice you will Oh, understand this. okay. Okay. So with the practice, we have to understand this. Okay. Yes. When you practice multiple times, Mm-hmm. you will by heart this transaction codes. Okay. Okay. Okay, sir. Yeah. Then select save. Your data will be saved. So back, create dummy profit centers. It is a required, it is a mandatory configuration. And the transaction, this is the transaction code and this is the menu path. So the menu path will be
display IMG, controlling profit center accounting, master data, profit center, create dummy profit center. Execute this. Double click on create dummy profit center. The name will be dummy underscore controlling area. Press enter. Then go to basic data. Here name the basic profit center as dummy profit center. Then dummy profit center. Then here you have to assign this dummy profit center under profit center group. So if you click on this check box, the standard hierarchy will be auto assigned to this profit center group. Then if you go to indicators, then company codes, that you will find that the company code is auto assigned to this dummy profit center. How it is possible? What what makes it possible? सर क्योंकि हमने Because लास्ट it टाइम will show del for company code structure, right? Sometime back we created for the profit center accounting, right? No. One of our previous customization, I have explained this. ये डमी प्रॉफिट सेंटर हमारे कंपनी कोड को ऑटो असाइन कैसे हुआ? सर इससे पहले जो हमने अभी सेटिंग करी थी CH वाली, तो उसके अंदर जो हमने कमांड दी थी हमारी कंपनी कोड की, इस वजह से ये हमें ऑटो असाइन हुआ है यहाँ पर। तो हमने वहाँ पे कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट करा था और वहाँ पे हमने मेंशन भी करा था हमारा कंपनी कोड। Yes. हमने जब कंट्रोलिंग एरिया कॉन्फ़िगर किया था तो कंट्रोलिंग एरिया में हमने कंपनी कोड असाइन किया था कंट्रोलिंग एरिया को। एंड तब मैंने बताया था कि जो भी कस्टमाइजेशन हम कंट्रोलिंग एरिया पे करेंगे, जो भी मास्टर डेटा मेंटेन करेंगे, उस सारे रिकॉर्ड्स को हमारा कंपनी कोड बाय डिफॉल्ट असाइन हो जाएगा। तो वो कस्टमाइजेशन से जो असाइन कंपनी कोड टू कंट्रोलिंग एरिया, वो कस्टमाइजेशन से ये ऑटो असाइनमेंट हुआ है। क्लियर? Okay, okay. Okay. So you need to understand the relationship between the customizations. Okay. Okay. So then click on save. Then double click on change profit center. Then it will show you the code that you have created under controlling area. Go to master data. And here you have to select the person responsible who is going to manage this dummy profit center. So you can enter their name. ये डमी प्रॉफिट सेंटर कौन मैनेज करेगा उसका आपको नंबर डालना है, नाम लिखना है। देन गो टू इंडिकेटर्स एंड हियर you have to activate this dummy profit center. So this is the pen icon. हेलो सर Wait, इसमें जो wait. वैलिडिटी पीरियड है वो क्या रहेगा? So हेलो it will be activated. सर, वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो अकाउंट्स पे है, फाइनेंस मैनेजर, वो उसका नाम डालने का है क्या? मतलब कैसे होगा वो? जो बंदा ये डेटा, ये डमी प्रॉफिट सेंटर का डेटा मेंटेन करेगा उसका नाम आएगा। वो आपका प्रॉफिट सेंटर, वो आपका कोई हेड भी हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकता है, या नॉर्मल या एसोसिएट भी हो सकता है।
और सर इसमें जो वैलिडिटी पीरियड लिखा हुआ 1950 से 1999, हाँ, करंट तक का भी ले सकते हैं ना उसको? नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर जो वैलिडिटी पीरियड लिखा हुआ है 1950 से 1999 हाँ, क्या है? सर ये उसको एनालिसिस हम पीरियड के बारे में करंट, पूछ रहे हैं कि जो एनालिसिस पीरियड अपना लिखा हुआ है एक एक हाँ, 1950 टू तो 12 आपको ये एनालिसिस जो प्रॉफिट सेंटर का एनालिसिस है, ये कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक करना है? ये जब भी सिस्टम क्रिएट हुआ है तब का डेट डाला है इन्होंने, कोई एक डेट, और ये इन्फिनिट डेट डाला है। तो प्रॉफिट को क्रिएट करते वक्त आपको ये डेट चेंज करना होता है। सो बेसिकली, why we need to create the dummy profit centers? So when you post a transaction, you have to assign the profit centers to that particular general ledger. And if you do not assign the profit center to the general ledger, then that data posted on general ledger in financial accounting will not be carry forward or not be carried to the profit center accounting. In that case, the dummy profit center system will automatically assign dummy profit center to that particular transaction where you do the end user have not assigned the actual profit center, so that it ensures that not a single transaction will be ignored for profit center reporting. जब एंड यूजर ट्रांजैक्शन पोस्ट करता है, तब जीएल अकाउंट के लिए प्रॉफिट सेंटर असाइन करता है, ताकि प्रॉफिट सेंटर रिपोर्टिंग के लिए वो रेवेन्यू या एक्सपेंस का जो ट्रांजैक्शन है वो उसके लिए डेटा कैरी हो सके टू प्रॉफिट सेंटर फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू प्रॉफिट सेंटर। अगर आप किसी ट्रांजैक्शन के लिए वो प्रॉफिट सेंटर असाइन नहीं करते हो, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली डमी प्रॉफिट सेंटर वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को असाइन कर देता है। इससे ये इंश्योर हो जाता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन प्रॉफिट सेंटर अकाउंट रिपोर्टिंग के लिए मिस ना हो जाए। तो ये उसका पर्पज है, क्रिएटिंग डमी प्रॉफिट सेंटर। हेलो यस। सर, आपने पिछले इसमें बताया था कि ग्रीनफील्ड जो है उसमें सप्रेशन मैंडेटरी, और जो है उसमें अपन अगर मैंडेटरी करेंगे तो ये करने की जरूरत है क्या? देखिए, कुछ ट्रांजैक्शन कोड्स, कुछ जीएल ऐसे है जिसको आप प्रॉफिट्स या उसको एक्सपेंस में डिफाइन नहीं कर पाओगे। किसी ट्रांजैक्शन के लिए पर्टिकुलर प्रॉफिट सेंटर या ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रॉफिट सेंटर नहीं असाइन कर पाओगे आप। ऐसे भी ट्रांजैक्शंस होंगे, तो उसके लिए आप फील्ड मैंडेटरी नहीं कर सकते। अगर आपने मैंडेटरी किसी पर्टिकुलर जीएल की फील्ड स्टेटस में प्रॉफिट सेंटर मैंडेटरी कर दिया है, लेकिन एक जीएल के लिए वो प्रॉफिट सेंटर मैंडेटरी है, दूसरे जीएल के लिए मैंडेटरी नहीं है, तो जो जीएल के लिए वो प्रॉफिट सेंटर मैंडेटरी नहीं है, प्रॉफिट सेंटर असाइनमेंट, तो वो जीएल का डेटा पोस्ट करते वक्त सिस्टम एरर देगा कि प्रॉफिट सेंटर असाइन करो, नहीं तो आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं होगा। सो आपको वो फील्ड स्टेटस ध्यान समझदारी से असाइन करने हैं। सो आप जो बोल रहे हो वो थोड़ा रिलेवेंट नहीं है।
Then you have, after activation, save your dummy profit center. Set कर दिया, ठीक है. Then the next customization is set control parameters for actual data. This is the transaction code and this is the menu path. So go to SPRO, SAP reference IMG, then controlling, profit center accounting, basic settings, controlling area settings, activate direct postings, and set control parameters for actual data. Execute, go to new entries. Here you have to maintain that from which fiscal year you want to maintain the uh, profit center accounting. So we will enter our current fiscal year, that is the start of our data posting in SAP. Then we'll select line items. So if you select this, then all your line items for which you have assigned the profit center will be, the data on that line items will be transferred to profit center accounting. Then you have to select the online transfer. Online transfer means whenever, if an end user do not assign, whenever the system automatically assigns the dummy profit center to any documents, that data will be transferred to profit center accounting. लाइन आइटम सिलेक्ट करने का मतलब ये है कि जब आप किसी डेबिट या क्रेडिट पोस्टिंग के लिए प्रॉफिट सेंटर असाइन करोगे तो वो डेटा कैरी होगा टू प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग. ऑनलाइन ट्रांसफर, कोई डॉक्यूमेंट के लिए अगर आप प्रॉफिट सेंटर असाइन नहीं करते हो तो सिस्टम डमी प्रॉफिट सेंटर ऑटो असाइन कर देगा और ये एक्टिवेशन से वो ट्रांजैक्शन प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग के लिए जो एक्चुअल डेटा वो पोस्ट हुआ है एफआई में वो कंसिडर कैरी होगा टू प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग. So that is the meaning of this customization. And see how to create a profit centers in under the controlling area. So a profits, if the profit cent one profit center can be assigned to multiple company codes, and when you create a profit center, all the company codes within the controlling area are assigned to it by default. A profit center can have an address and communication data. If the profit center is a physical location, then it will have an address and communication data. एक प्रॉफिट सेंटर मल्टीपल कंपनी कोड्स को असाइन कर सकते हो. जब आप प्रॉफिट सेंटर क्रिएट करोगे तो जितने कंपनी कोड्स आपने कंट्रोलिंग एरिया को असाइन किए हैं सारे कंट्रोल कंपनी कोड्स को प्रॉफिट सेंटर बाय डिफॉल्ट असाइन हो जाएगा. अगर प्रॉफिट सेंटर फिजिकल लोकेशन है तो उसका एड्रेस और कम्युनिकेशन डेटा भी हो सकता है. So to create a profit center, there are two methods. One is a, uh, through transaction code KE51, and this is the menu path. And the second thing is through standard hierarchy. So the difference is, in first method, you have to create the profit center, then you need to define a group also in another transaction, and then you have to assign them to the profit center standard hierarchy. And here in the second method,
all these customizations are you can perform under a single transaction code. फर्स्ट मेथड से अगर आप कॉन्फ़िगर करते हो तो आपको पहले प्रॉफिट सेंटर डिफाइन करना है, फिर ग्रुप डिफाइन करना है, और फिर उसको स्टैंडर्ड हायरार्की को असाइन करना है। सेकेंड मेथड से ये सारे कस्टमाइजेशन एक ही ट्रांजैक्शन कोड में आप डिफाइन कर सकते हो। सो द स्टैंडर्ड मेथड इज द स्टैंडर्ड हायरार्की मेथड to define the profit centers. So we'll follow the second method. So go to SAP, then open another session, and the menu path is SAP Easy Access, Accounting, Controlling, Profit Center Accounting, then Master Data, Profit Center, Individual Processing, sorry, Master Data, then Standard Hierarchy, and Change. Execute this. So you will find the system will display the controlling area, and you will find the profit center is also defined under it, under the standard hierarchy. So first we'll rename the standard hierarchy with profit center standard hierarchy to DL4, press enter. If when you access this transaction and you find that if the controlling area is different than your controlling area, then go to settings, and here also you can perform the customization set controlling area. So select this, the function save your entries first. Okay. So first we have to save the end because we have already changed it. If you go to settings now, set controlling area, no, we have not yet saved. So हमने ये चेंज किया है, इसीलिए सिस्टम हमें वो करने नहीं दे रहा है, पहले उसको सेव करना पड़ेगा। सो यहाँ से आप कंट्रोलिंग एरिया चेंज कर सकते हो। देन टू डिफाइन द प्रॉफिट सेंटर, select the standard hierarchy, click on create, and then lower level group. And here the naming convention will be profit center standard hierarchy underscore your group, name for your group. And you can name the group as revenue, press enter. Select this group, create profit center. And the naming convention for profit center is profit center, then your controlling area code, then the code for your group, then your profit center, and the number of profit center. Why we have created the group? Because all our profit centers for the revenue are grouped under the profit center group revenue. So all the revenue profit centers will be listed in one group. So it will create an uniformity. Then we have defined the group, then profit center name and one. So if your profit center is a physical location, like a branch office, say Madras, Mumbai, Delhi, Calcutta, then for each location to record the sales to the profit center, you have to create a different profit centers. अगर मान लो आपके 5 ब्रांच ऑफिसेस है, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, और हर एक
आपके सेल्स ट्रांजैक्शंस, हर एक लोकेशन वाइज सेल्स ट्रांजैक्शंस को आपको रिकॉर्ड करना है अ, आपके सेल्स के लिए। तो हर एक लोकेशन के लिए आपको डिफरेंट प्रॉफिट सेंटर्स बनाने होंगे। सो उसको आप नंबर दे सकते हो 1 2 3 4। सो ये पर्पस है। एक और एक पर्पस है कि आपको प्रॉफिट सेंटर ग्रुप क्यों बनाना है। So here you can name the profit center as sales profit center. Then the person responsible who is you will be responsible to for this maintaining the data. Then go to indicators, company code. You will find your company code is auto assigned. Then if you have an address and communication data, you can enter. So back to basic data. Then you will find the status is inactive. Here you can also maintain the analysis period, for which period you want to analyze the data for profit center accounting for this particular profit center. So you can maintain those dates, start date and end date. So here select activate. You have to select activate again. The status is changed to active. So this is how a profit center can be created. Any doubts? सर हाँ। अभी जो मैं प्रॉफिट सेंटर पे काम करता हूँ, बेसिकली मेरे पास मेरा वो प्रॉफिट सेंटर नंबरिंग है, ठीक है, कोई नहीं यहाँ पे नाम है। अब उसके अंदर जो एंट्रीज वगैरह मैं देखता हूँ रिकंसिलिएशन की, ठीक है, तो वो रिकंसिलिएशन की जो एंट्रीज आ रही हैं वो राहुल और करण पोस्ट करते हो भी सकता है, क्योंकि पर्सन रिस्पॉन्सिबल और यूजर रिस्पॉन्सिबल में फर्क ये है कि अगर ये मान लो फिजिकल लोकेशन है, ये अगर फिजिकल लोकेशन है तो करंट वहां का सुपरवाइजर भी हो सकता है, ब्रांच हेड भी हो सकता है। तो जिसके अंडर ये ट्रांजैक्शंस मेंटेन हो रहे हैं वो है पर्सन रिस्पॉन्सिबल। ओके। वो लोकेशन के लिए जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं वो किसके अंडर मेंटेन हो रहे हैं, तो करंट के अंडर मेंटेन हो रहे हैं। ओके ओके। यूजर रिस्पॉन्सिबल में आप डेटा डाल रहे हो तो वो बंदा रिकॉर्ड कर रहा है जो ट्रांजैक्शन पोस्ट कर रहा है, तो वो होता है यूजर रिस्पॉन्सिबल। ओके Okay. So similarly, we will now create the other profit centers. The process is same. Select the standard hierarchy, create lower level group, profit center standard hierarchy, and then group inventory. So I will rename it as inventory presenter. Now select the group, create profit center, then profit center, your controlling area code, then group name, then profit center name and number. सर ये जो हम प्रॉफिट सेंटर के अंदर प्रॉफिट सेंटर डेल्टा 4 और INP S1 लिख रहे हैं, ये लिखना जरूरी है या इसके अलावा हम कुछ और भी लिख सकते हैं? ये स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन है, अगर आप अलग से मेंटेन कर रहे हो यू कैन। जैसे मेरे यहाँ जो है नंबरिंग चलते हैं 1 2 1000 5000 तक चलते हैं, बेसिकली यस, वो उनके कर स्टोर्स सकते हैं। हैं। तो
इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हम अपने अकॉर्डिंगली उसको मेंशन कर सकते हैं कि हाँ मेरा स्टोर नंबर एक का एक डाल सकते आपके हैं हम, दो। क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, how he wants to maintain its profit centers, how he ओके wants to name them, वो अपने प्रॉफिट सेंटर को क्या नाम देना चाहता है, क्या कोडिंग देना चाहता है, वैसे आपको करना है। ओके। बट ये स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन है। सो प्रॉफिट सेंटर, परचेस प्रॉफिट सेंटर, हेलो यस। सर, सब न्यूमेरिकल हो सकता है क्या? क्योंकि मेरे कंपनी में सब न्यूमेरिकल प्रॉफिट सेंटर है। हो सकता है। और सर कंपनी कोड भी न्यूमेरिकल हो सकता है क्या? क्योंकि मेरे यस, कंपनी में वो भी है। यस, मीनिंग ही है अल्फा न्यूमरिक। नहीं नहीं, सब न्यूमेरिकल ही है। अल्फा अल्फा है ही अल्फा, नहीं। अच्छा तो अल्फा न्यूमरिक का मीनिंग क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट एंड नंबर। हाँ। तो जब अल्फाबेट नंबर का कॉम्बिनेशन है तो अल्फाबेट भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है। अच्छा, तो चारों डिजिट न्यूमेरिकल भी हो सकता है। यस, ओके। जितने भी आप 4 डिजिट अल्फा न्यूमरिक कोड देख रहे हो वो सारे न्यूमरिक हो सकते हैं, सारे अल्फाबेटिक हो सकते हैं। ओके। अच्छा, नहीं मेरा कंपनी अभी ECC 6 यूज कर रहा है अभी भी। हम्म। तो मुझे लगा क्या ECC 6 में ऐसा है और खाना में ऐसा है, ऐसा लगा। नहीं नहीं, ओके। सेम ही है। सो द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, then the status is inactive, so select activate and then activate it again. So now again select profit center, standard hierarchy, then lower level group, then expense, press enter, select group, create profit center, rent expense profit center, then person responsible, then activate and activate it again. So now we have created the account groups and the respective profit center under the account groups, and we have activated them. So now click on save to save the customization. So how to create the profit center, the concept is clear. यस सर। Okay. So this is the graphical representation, how to name your profit center. So the next concept that we will discuss is cost center accounting. So the cost centers are maintained to record the cost for the particular activity, for particular process. Again, like profit centers, cost centers can be a physical location, can be a business function, or can be a product segment or market segment. With the help of cost centers, management can analyze the cost that company code is incurring for any particular activity. So then management can take a decision or make an analysis how to reduce the cost which will maximize the profits, or which can also uh, minimizes the cost burden on the company code.
कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग कॉस्ट रिकॉर्ड करने के लिए मेंटेन किया जाता है। पर्टिकुलर ब्रांच के लिए क्या कॉस्टिंग हो रही है, पर्टिकुलर बिजनेस फंक्शन जैसे सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, उनके लिए क्या कॉस्ट इनकर्स हो रहे हैं, किसी मार्केट सेगमेंट में क्या कॉस्ट इनकर हो रहे हैं, प्रोडक्ट के लिए क्या कॉस्ट इनकर हो रहे हैं, वो डेटा मेंटेन किया जाता है अंडर कॉस्ट सेंटर रिपोर्टिंग, जिससे मैनेजमेंट को ये पता चलता है कि हम किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी या प्रोसेस के लिए क्या कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, तो ये कॉस्ट मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है। ये सारे डिसीजंस लेने के लिए कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग हेल्प करता है टू मैनेजमेंट। सो दिस इज व्हाट इज मीन्ड बाय कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग। एनी डाउट्स? No, sir. Okay. So for cost center accounting, we have already done the customizations while defining the controlling area. So here also this the process is same as we have defined the profit centers. So here also you can create a profit center through transaction code case 01, or you can create through standard hierarchy. Again, we will follow the standard hierarchy method. So go to SAP अच्छा सर, menu. वैसे प्रॉफिट अकाउंटिंग जो है वो तभी लागू होती है ना जब ब्रांच अकाउंटिंग होती है, या हमारी नहीं ब्रांचेस हो अलग अलग? नहीं 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 नहीं, आपको देखो, प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग ब्रांचेस के लिए कब यूज किया जाता है, जब आपने बिजनेस एरिया मेंटेन नहीं किया है, तब ब्रांच ऑफिस एज अ प्रॉफिट सेंटर मेंटेन होता है। ओके। ओके, Sir, can you go back to the note 1 minute? वेयर आई कैन गो? Notepad, the document PDF. यस। Okay, I have noted the transaction. Thank you. सो द मेन्यू पाथ इज, हेलो हेलो ये हाँ बोलिए सर, बोलिए। अभी आपने जस्ट बताया क्या बिजनेस एरिया अगर डिफाइन नहीं किया होगा तो अपने को प्रॉफिट सेंटर का यूज, आप मतलब प्रॉफिट सेंटर क्रिएट करने का है अपने को, ऐसा है ना सर? नहीं 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 नहीं, प्रॉफिट सेंटर में क्या है कि अगर प्रॉफिट सेंटर फिजिकल लोकेशन है तो उसका कम एड्रेस और कम्युनिकेशन डेटा होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने ब्रांच ऑफिसेस एज बिजनेस एरिया मेंटेन नहीं किया है और उसको आप एज अ प्रॉफिट सेंटर मेंटेन करना चाहते हो, तो आपके प्रॉफिट सेंटर्स फिजिकल लोकेशंस होंगे, ओके। या फिर वो आपके, देखो हमने प्रॉफिट सेंटर असाइन डिफाइन किए हैं एज बिजनेस फंक्शन, सेल्स, देन परचेज, एक्सपेंस, ये जो हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस है उनके हिसाब से हमने प्रॉफिट सेंटर डिफाइन किए हैं। ओके ओके, सर, आपको, हाँ बोलिए। एक मिनट, प्रॉफिट सेंटर में अपन शॉप, वेयर हाउस वो भी क्रिएट कर सकते हैं क्या? यस, ओके। देखिए पर्टिकुलर, देखिए प्रॉफिट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज यही है कि आपके जो फाइनेंशियल्स है उसको आप किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए कैसे एनालाइज करना चाहते हो। ओके, उसको फर्दर ड्रिल डाउन कैसे करना चाहते हो। देखो, आपको मार्केटिंग एक्सपेंस है, आपने जीएल बुक किया, मार्केटिंग हो गए, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, आप किसी उसको कुछ मेथड्स है जिससे आप मार्केटिंग एक्सपेंस जो 1 लाख है, तो आप वो 1 लाख को फर्दर डिवाइड कर सकते हो कि वो 1 लाख कौन सी पर्टिकुलर एक्टिविटी पे कितना खर्चा हुआ है मार्केटिंग एक्सपेंस का। ओके, सो जो वो मेथड से आप उसको 1 लाख को
डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो वो आप थ्रू प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ओके, तो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग का पर्पस ही यही है कि आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है कॉस्टिंग वाइज। क्लियर? ओके सर। So to create the cost center, the transaction, the menu path is SAP Easy Access, then accounting, controlling, cost center accounting, master data, standard hierarchy, and change. Execute this. Here we have defined this code during the customization activity maintain controlling area. From there it is system have auto defined over here. So we have to name the standard hierarchy, that is standard, that is cost center standard hierarchy for DEL4. Press enter. So it will change the description. Select the standard hierarchy, create lower level group. We will create the same lower level groups. Now it will start with C. Cost center standard hierarchy underscore group name. Revenue. Press enter. Select the revenue, group revenue, create cost center, then controlling area code, your group name, then the cost center name and number. हेलो सर, Yes. कॉस्ट सेंटर तो सिर्फ एक्सपेंस के लिए होता है ना? प्रॉफिट सेंटर्स में कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट और प्रॉफिट, कॉस्ट और एक्सपेंस दोनों एनालाइज होता है, तो आपको कॉस्ट सेंटर की भी जरूरत है। ओके। रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करोगे तभी प्रॉफिट आएगा ना। Then person responsible, again concept is same. Then cost center category. So these are the few categories that is defined. So our cost center is for sales, so we can select this category as sales. Then go to organization. The functional area entry will be ignored. Okay, continue. So this field is suppressed. So what it means that we will discuss later. Business area, now it is a mandatory field. So you can assign the business area. So I will assign, you can assign any of this business area. Then here you have to assign the profit center under the cost center. So select this, search. So this is the profit center that we have defined for revenue. For sales profit center, double click on it. The data, how the data is flow from financial accounting to cost controlling. First, the transaction is recorded on the general ledger. While posting the general ledger, the end user will assign cost center to the general ledger. From cost center, the data will be flown, will be carried to cost center. And from cost center,
since the profit center is assigned under cost center, the data from cost center will carry to profit center. So this is how the data is carried from cost center to from financial accounting to controlling. डेटा कैसे फ्लो होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप डेटा पोस्ट करोगे ऑन जनरल लेजर, जनरल लेजर को आप असाइन करोगे कॉस्ट सेंटर. सो जनरल लेजर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है, वहां से डेटा पोस्ट होगा टू कॉस्ट सेंटर जो कंट्रोलिंग एरिया का पार्ट है. कंट्रोलिंग कॉस्ट सेंटर के अंदर आपने प्रॉफिट सेंटर असाइन किया है, वहां से डेटा कैरी होगा टू प्रॉफिट सेंटर. सेम कॉस्ट सेंटर से बिजनेस एरिया पे भी कैरी होगा क्योंकि आपने बिजनेस एरिया कॉस्ट सेंटर के अंदर असाइन किया है. सो ऐसे डेटा फ्लो होता है फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू कंट्रोलिंग मॉड्यूल. क्लियर? Sir, is there any kind of flow chart to understand this flow from financial accounting to controlling area? No, you can create for your Okay. own reference. There is no standard that not a ready-made flowchart is Flow given. chart. Okay. So you can create your own flowchart to understand the relationship. Okay. I'm new to accounting, so most of these accounting terminologies are very new to me. Now we are doing this company code creation and all the configurations for this Del 4 one after the other. Is there any way to understand like what is the next step after this particular configuration? See, that you will understand when you complete the course, Okay. because what I am trying is to explain you the whole process of Whole process. Okay. is in a step by step way. Okay. Okay. So if you first, now you focus on each step. Okay. Okay, what you have configuring now Mm-hmm. and what you have configured earlier, because if you configure a first step, it is a first step, it will not have any prior configurations impact. But Okay. when you configure second step, it will have the impact from the first configuration. First configuration. Okay. So this is how you can learn the relationship between each configuration, how the earlier configuration will affect the next configuration. Okay. Okay. Okay, So sir. with practice you can learn. You will learn. Okay. 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 Okay, sir. Thank you. So don't hurry yourself that you want to learn everything right now. Okay. Focus on each and every step. It will help you to learn since you are new to finance account. Okay. Okay. Okay, sir. Yeah. Thank you. Okay. So everybody is clear why we need to assign profit center under the cost center? यस सर. सर इसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ बोलिए. क्या इसकी कोई लिमिट है कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर की, कि हम लोग सिर्फ इतने ही प्रॉफिट सेंटर या कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं? No. Then go to indicators. Here you need to make sure that first 4 indicators are not locked. Select as locked. Means if you lock this any of these indicators, then these 2 indicators, if you lock, then you cannot maintain a plan data for this cost center, or you cannot maintain the actual data against the plan figured against the plan data for this cost center. आपको इंश्योर करना है कि ये चारों इंडिकेटर्स अनमार्क हो एज लॉक्ड,
बिकॉज अगर इसमें से कोई इंडिकेटर लॉक है तो ना ही आप प्राइमरी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो आप रिकॉर्ड कर पाओगे ये कॉस्ट सेंटर पे, ना ही कोई बजटेड फिगर मेंटेन कर पाओगे ये कॉस्ट सेंटर के अगेंस्ट। सो आपको ये इंश्योर करना है कि ये चारों बॉक्स अनमार्क हो। देन अगर ये फिजिकल लोकेशन है तो उसका एड्रेस एंड कम्युनिकेशन डेटा होगा, अगर नहीं है तो गो बैक। And like profit center, we do not need to activate the cost center. When you save it, it will automatically activate it. So we will create the similar cost centers as we have created the profit centers. So select standard hierarchy, create, then lower level group, then inventory, press enter, select group, create cost center, purchase cost center. For purchase cost center category, you can select production, you can material, depend on your requirement. Okay, here again select the business area. Again, if you are maintaining the cost centers, uh, here I am maintaining the cost center as the function or the process, that is purchase, sales. Okay, and if I am maintaining, I have four different business areas: Bangalore, Delhi, Calcutta, Madras. Then I have to create four cost centers for purchase, four cost centers for sales, defining each individual cost center for each business area. अगर मेरे चार बिजनेस लोकेशंस है और चारों और मुझे चारों के लिए सेल्स कॉस्ट सेंटर डिफरेंशिएट करने हैं, तो ये कॉस्ट सेंटर जो परचेस है, सेल्स है, मुझे चारों बिजनेस एरिया के लिए बनाने पड़ेंगे, या फिर ये फील्ड मुझे ऑफ करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ देन बिजनेस एरिया वाइज मेरा कॉस्ट सेंटर मेंटेन नहीं होगा। ओके, देन असाइन प्रॉफिट सेंटर, परचेस, then check indicators, back to basic data and save. It will get activated. So again, select standard hierarchy, create lower level group. Now we'll create for expense, enter, select this cost center, rent expense cost center, it can be a service cost center, it can be uh, administration, business area,
assign the cost center for expense, check indicators, and then save.